Hi everyone, this is Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. आप सभी का स्वागत है आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल में, जो लर्निंग सीरीज है wavestrategy.com के द्वारा. So it's a very warm welcome, a fantastic morning on a Saturday. And are you not excited to see where the market is headed from here on? किस तरीके से आपको मार्केट को देखना है, कैसे अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. So before we quickly start, very important is that you need to understand this webinar is exclusively for people who are a part of it. It's not for anyone else. और आप लोग ने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, that is a very classic thing, because that shows that you want to do something more to what you are existingly doing and want to flourish and trade extremely well in the market. So this webinar is going to be in Hindi and English both. So don't worry about that. We are going to cover this Hindi और English दोनों भाषा में करेंगे. साथ में very important, do not waste your time looking at a WhatsApp or trying to do something. You have to ensure these 2 hours. So ये webinar is going to continue till 1:15. You need to ensure these 2 hours you are completely focused over here, because what we are going to do is going to be exceptionally different than what you might have already known so far. So बहुत important है कि आप अपने फोन को साइलेंट पे रखो. 2 घंटे आप फोन के बिना रह सकते हो, ठीक है. Let's give it a shot and try that we are able to survive without phone, because this can change your life if you want to create that parallel source of income, या passive source of income along with your job, or if you want to quit your job and do it full time. आपके पास एक मेथड होना चाहिए, ठीक है, एक गोल होना चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए, एक ट्रेड सेटअप होना चाहिए. वो सब चीजें हम आज डिराइव करेंगे. वी विल डिराइव इट टुगेदर. Along with that, we are also going to identify the possible areas or time when the markets can reverse either upside or downside basis of time cycle. So this webinar is going to be till 1:15. We are going to start with candlestick. Looking at candlestick, you might think यार candlestick तो already आता है, लेकिन उसको बहुत ही सिंपल तरीके से इफेक्टिव वे में हमें देखना पड़ता है. Okay, so that technique I am going to teach it to you. Along with that, we are also going to focus on टाइम साइकिल को देख के कैसे ऑप्शंस पे ट्रेड लिया जाता है, वो हम करेंगे. So that's the agenda of today. It's going to be fantastic. Along with that, for people who might not know me, very quick introduction. My name is Ashish Kyal. I am a chartered market technician from US. I did way back in 2008, cleared all the 3 levels of CMT in just 1 year of time. तीनों लेवल मैंने 1 साल में क्लियर कर दिया. I worked with Lehman Brothers. 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ. Lehman Brothers filed for bankruptcy. It's a US based investment firm and it filed for bankruptcy. And that is how we can clearly see how challenging it can be for people who are able to possibly not understand कि job security होती नहीं है. Before I move on, I want to know, are you able to hear me out clearly, loud and clear, no disturbance, everything is proper? Are you able to see that? Are you able to see me? Are you able to hear me? Everything fantastic. And very warm welcome to all of you. Tarun, great to see you. Manish, Santosh, Kiran Naik, Amit, Brijesh, Darshit, Neha, fantastic. Rohit, Kulapali, fantastic. Vijay, you are as well here. So many of you are here. It's really Swapnil, Geeta, very warm welcome. देखिए यहाँ पर thousands of participants हैं. I might not be able to take questions from everyone, so please pardon me for that. ऐसा नहीं है मैं आपको ignore कर रहा हूँ. Shiva, good morning. Imran, you as well, and Sanjay, you as well. So please do not think कि मैं आपको ignore कर रहा हूँ, क्योंकि इतने participants हैं, इतने सारे chats हैं कि I might not be able to see everything, right? So again, I work with Lehman Brothers. Bankruptcy file किया, no job security, lost my job, was wondering what I want to do in life, started understanding about markets because market is supreme. And then I started my journey. I then worked with Nomura for some time, and then I quit my job and doing trading full time, mentoring, and also doing research. So that's my entire way. And when I started doing this, I said to myself, यार life में अगर कुछ करूँगा, तो I will ensure that
I am available to people as a mentor to every single one of you who wants to learn from the market, who wants to learn from me. I am available. इसी के लिए मैंने एक बुक भी पब्लिश की. You know, the book name is Effective Trading in Financial Markets Using Technical Analysis. This is the book which I published, available on Amazon. This is for 995 rupees. I'm telling this because uh, Amazon has some tricks where they publish the book and changes the price to a London price. So don't please pay up a higher price than that. And I want to ensure one more thing. इस बुक को लिखना मैंने शुरू किया था 2 साल लगे एंड पेंडेमिक हैपेंड. So lot of examples I have taken from post pandemic also. So October 2020 में book was launched and it has been endorsed by Robert Proctor himself. And as I say, market को predict करना possible है. So for many of you who think that markets cannot be predicted या forecasted, it is possible, and I have done that time and again. I'm going to give you enough proof today, which is going to change the way you see the market for sure. मेरा eye opener था 2008 में. Okay, in 2008 things changed for me drastically, and which I think happens for good, right? That's why I am here. So similarly, this can be your eye opener. These 2 hours can change the way you are acting as a trader. It's going to transform you, because what I have understood is that the most important aspect for a trader is time. And you know, the least talked about indicator in financial market is also time. अगर मैंने आपको बताया होता कि रशिया यूक्रेन वॉर के पहले 1 महीने पहले मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते थे, डोंट यू थिंक दैट इज लाइक वाओ, हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके साथ ही आई वॉन मेनी ऑफ द गेम शोज, सीएनबीसी आवाज पे अगर आपने देखा होगा, consecutive 2 weeks I have won Bullseye CNBC TV 18 consecutive 4 to 5 times I have won those trade shows. I'll share the screenshot very quickly along with you. So that's my journey as a trader, as a mentor, and we are here right now. Fantastic, because you people are simply taking that step forward. See, what I love about people who are not, you know, staying back and laid back, they are taking that step forward because उन्हें life में कुछ करना है. And that is what, by coming here, you have showed that. And really glad that you are taking that step forward. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let me very quickly open up my PPT and share across very quickly. Then we will enter into the world of candlesticks, enter into the world of time cycles, and we are going to derive कि time को देख के किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं. So यहाँ पर आते हैं, आगे चलते हैं. I'm going to hide myself over here so that you are able to focus on what is there on the chart. Mani Riji is saying your concepts are very interesting and unique. This concept, I'm again repeating, ये जो concept है ना, जो मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, this concept is actually not discussed by anyone, and this is used by hedge funds. So Elliott wave, time cycles जैसी टेक्निक वेव थियरी में यूज की जाती है. जो hedge funds, big players, big traders, they want to know market future में क्या होगा, and they use these techniques. But बहुत कम जन है जो इसे disclose करते हैं. And my mission is to bring this technique of time to every single retail trader here with me, and they should be able to benefit out of this theory. And बहुत simple है. अगर किसी ने आपको बोला होगा कि यार बहुत complicated है, नहीं कर सकते, नहीं चलता है, नहीं. It's a very, very simple method and very powerful technique. The problem is people make it complicated. And the other thing that you have to understand very clearly, you have to apply it understanding that ये एक method है which can be used as a probability. देखिए मार्केट में अगर किसी ने बोला होगा 100% ऐसा ही होगा, तो वैसा नहीं होता है. So you have to understand that very clearly. It will not happen. ठीक है. So चलते हैं. Wave Strategy is an independent research house. We research on varied asset class. That's the company I found. You can see me on various business channels, CNBC TV 18, ET Now, BTVI, various. I've written for Economic Times section of Navbharat Times, and here is what made it very interesting. देखिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रेडिंग के साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, it is also about trading with discipline. Trading psychology is very, very important.
यहां पर अगर आप जो देख रहे हैं, सी दिस इज नॉट टू शो दैट मैं जीत गया एंड दोज थिंग्स, आई टेल यू हाउ आई वोन, आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट टुडे. दिस इज नॉट बीन डिस्क्लोज टू एनीवन सो फार, जो मैं आपके साथ करने वाला हूं आज. सीएनबीसी आवाज पे consecutively for 2 weeks I have won and become खिलाड़ी नंबर 1 for the month. ये जो सेकंड फाइनल राउंड था गेम का, उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो हुआ. हाउ? ऑन डे 1, सी हमें एवरी डे वी हैव टू गिव 4 स्टॉक्स एज एन इंट्राडे ट्रेड, 3 स्टॉक्स एज एन इंट्राडे ट्रेड, एंड we can carry those stocks or we can square off and give 3 new stocks. On day 1, I was negative 7%. I'm repeating. You might be shocked to see, यार क्या बात कर रहा है आशीष ख्याल, डे 1 पे नेगेटिव 7% कोई बताता है क्या? But I am the guy who is going to be honest with you and factual. Negative 7% था डे 1 पे. Then डे 2 पे I thought कि यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. I realized कि डे 1 पे नेगेटिव क्यों हुआ, because by the time मैंने जब मार्केट में कॉल्स दिए और बाय द टाइम वो मार्केट में लाइव हुआ, उतने टाइम में 4% का रैली हो गया था स्टॉक्स में. सो इट वाज नॉट माय फॉल्ट, बिकॉज बाय द टाइम द कॉल्स वेंट लाइव द स्टॉक वाज ऑलरेडी रैलीड. नाउ दैट्स अनफॉर्चुनेट, राइट? दैट्स व्हाई आई वेंट नेगेटिव, बिकॉज बाद में वो वहां से रैली होके नीचे आ गए. डे 3 पे आई रिकवर्ड बैक टू नेगेटिव 4%, एंड डे 4 पे I was plus 21%, which means that in 1 day of time, I recovered back 25% 1 day के अंदर. Now ये चीज मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ? इसका मतलब है मार्केट में एक टेक्निक है, लेकिन वो 100% शॉर्ट टेक्निक नहीं हो सकती. बट इफ यू हैव दैट टेक्निक, यू कैन मेक मनी. If I can become खिलाड़ी number 1 from 0 or negative to plus by 21%, you can do it as well. That is what I want to say. So जब loss हुआ, I was losing very less. I was losing 2%, 1%, 3%. But जब profit हुआ, look at the stocks that went exceptionally up when I started making money. Angel 1 up by 12.5, Ambuja 8, 5 and 3. This is the proof that shows that in 1 day you can change your entire trading style and it can work out very well. That's a proof. I'm giving it to you. So I became khiladi number 1 consecutively, and apart from that I won on CNBC TV 18 multiple times, consecutive times, and you can see it here. I'm not going to spend time. You can see I've written for economic times sections. I've been speaking at I am Trichy, National Stock Exchange, CNBC TV 18, and a lot of places. Here is my mentor, Martin Pring, Ralph Akampura, and it's fantastic. This is the book I've already talked about. And these are all the happy faces from various. I was also speaking at China Investment Forum. I have been, by the way, selected by China Investment Forum for their Hall of Fame. There were 3,000 to 4,000 participants. जो लोग टाइमिंग द मार्केट के बारे में सीख रहे थे, एंड दे वर सिंपली थ्रिल्ड टू नो दैट समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट, एंड ये इतने अच्छी तरीके से काम करता है. सो दे वर सिंपली अमेज्ड टू सी समथिंग लाइक दिस वर्किंग इन द मार्केट. एंड इफ चाइना कैन लर्न इट, देन आई एम श्योर यू पीपल कैन एज वेल डू इट एंड लर्न इट एक्सट्रीमली वेल. ठीक है? माई ट्विटर हैंडल इज @kyal_ashish, एंड ensure you follow me on Twitter. बहुत सारी चीजें हम करते हैं वहां पर. And Telegram channel is AK Trading Gurukul. That's the Telegram channel. We are SEBI registered research analyst. And चलते हैं अभी यहाँ से चार्ट की ओर. Look at this chart of Nifty very, very clearly. We are starting with the understanding of candlestick before we move on to the timing the market technique. Now ये चार्ट को देखो. I will pause for 5 seconds. Just look at this chart, blank chart only with candle. यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल मार्केट जो मूवमेंट है, that has been on the upside. ठीक है?
the overall market movement had been on the upside very clearly is what we can make out. Now, once you are seeing here, we can see that how do we determine the trend? The trend is determined when I have a higher high and a higher low formation. Higher high, higher low formation का क्या मतलब होता है? That this high is above the previous high and this low is above the previous low. That determines that the overall trend of the market is on the upside until we see a lower high and a lower low formation. मतलब ये वाला high previous high के नीचे है and this low is below the previous low. This is an indication that the trend which was on the upside is now changing to the downside. ठीक है, which is going to be valid until we see again a move upside, a higher high and a higher low formation. Okay, is it clear? बहुत ही simple technique है, very effective and very strong method. This technique is known as Dow theory. ठीक है, what's in the name, हमें नाम में नहीं जाना है. I'll again repeat, this is for every one of you who wants to become the time trader. I call you people as a time trader because we will be trading basis of time. लेकिन प्राइस को देखना नहीं भूलना है because price and time confluence is very important. So if we are looking at this chart, this high point is above the prior high point and this low point is above the prior low point. So that's why we call this as a higher high and higher low. Similarly, this high point is below the prior high, this low point is below the prior low. So इसे setup को कहते हैं lower high and lower low. Only when you see again a higher high and a higher low, you can say that the trend is changing back on the upside. Until that happens, the trend will remain intact on the downside. Okay, is it clear? Before I proceed further on this, I would also like to know how many of you are actually trading as a fresher, as an intraday trader, swing trader या investor. So यहाँ पर मैंने एक पोल स्टार्ट किया है so that I want to know कि कौन कौन कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, because accordingly I can pace my lecture and I can accordingly take examples from that part of the market. Okay, that's why I'm asking you, and people who are there with me on YouTube, for you all, you can join in this kind of polling activities. देखिए interactive activity, यहाँ Zoom link मैंने share की है. You can be a part of these activities by joining me over here. So ensure that you are joining me on this activity because यहाँ से काफी सारी चीजें मुझे पता चलती है आपके बारे में, so that I can take examples accordingly of that segment, of that part. I can see many of you are freshers also here and intraday trader. ठीक है, I'm ending the poll very quickly now. I'm going to take a few more polls, so please understand this is for you, this is not for me. ठीक है, and I want to also know, is this your first webinar with AKTG? AKTG का मतलब होता है आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल. गुरुकुल कहते हैं हम इसे. क्या ये आपका पहला वेबिनार है? So that I know if it's your first webinar, then I will accordingly take those examples. ठीक है, so okay, I can see equally divided. So there are many who are attending it for the first time and many who are here for done again as a repeated. Dattatri is saying, sir ji aap Putin ke bhai lag rahe ho. Okay, I get it many times that I look like Putin. चलिए वो बाद में थोड़ा सा हम mix up करेंगे. I don't want to be very theoretical, so we will mix it up later on. I'm ending the poll now. Thank you very much for participating. यहाँ पर अभी चार्ट पे चल के देखते हैं. Okay, Hussein is saying I'm associated with AKTG since Jan 2018 till life allows. Thank you. यहाँ पर this is, can I say this is higher high and higher low formation until here? Everyone agrees with me?
एवरीवन एग्रीज विथ मी दैट यहां पर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है टिल दी अप मूव. क्लियर है? कैन आई से दिस इज अ लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन? Everyone, this is a lower high lower low formation. Okay, now with example of the chart here, I'm marking a points here. Can you tell me out of this example जो नीचे idealistic chart मैंने आपके सामने रखा है, in this can I say that we are right now standing at this point of the market? क्या मैं बोल सकता हूं हम फिलहाल इधर है कहीं पे यहां पर से? Can you relate that? ओके, नाउ यहां से मैं ये लाइन निकाल देता हूं बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर. एवरीवन, आई वांट every single one of you to understand this concept. Now you can clearly relate that we are standing right at this point which is here. So if यहां पर से हमें ट्रेंड अपसाइड रिवर्सल चाहिए, what is that we require now? अगर हमें अपसाइड रिवर्सल चाहिए तो क्या होना चाहिए यहां से? कैन आई से वी नीड टू सी अ मूव ऑन डाउनसाइड, ठीक है, एंड बैक ऑन द अपसाइड. दिस विल श्योरली कंफर्म that whatever started from the top of 18,600 is over and the downtrend is 18,600 से जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ था that is complete and the uptrend is starting. So we do not need a close above 18,000 also to confirm this. What we require is a formation of a higher high and a higher low, which means मेरे को 18,000 के पहले भी confirmation मिल सकता है provided I am seeing a formation of higher high and a higher low. Is that thing clear? So if we move this way, the trend will reverse on the upside. If we do not move that way, तो क्या हो सकता है फिर? मतलब what can be the possible outcome? Then we can simply have a move up and then we can again start moving back down because nothing has changed. Okay, nothing has changed. Is that thing clear? Everyone, now I am going to tell you another very important aspect of a trading candlestick ke basis pe. What is that aspect? When you're looking at a candle, I'm not getting into what is a different definition very clearly. I'm just बहुत briefly मैं explain कर रहा हूँ. This is a candle. Okay, this is known as the body. This is known as the upper wick or the shadow, and this is known as the lower wick or the shadow. तो ये body है, ये upper shadow है और ये lower shadow है. Okay, this is what we call as a candle formation. Now when a trend starts, ट्रेंड कैसे बनता है और कैसे चलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन अप्लाई इट ऑन इंट्राडे चार्ट, 5-minute चार्ट, 30-minute चार्ट, निफ्टी, बिटकॉइन, क्रूड, गोल्ड, एवरीवेयर. These techniques can be applied everywhere in everything that we are doing today. आप उसको ट्रेड कर सकते हो. तो अगर ये कैंडल ऐसा बना, नाउ once suppose the trend is down, suppose the trend is down, when do I say that the trend reverses up? The trend will reverse back on the upside when you see a close which is above the high of the prior candle. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. When you see a close above the prior candle high, that is the indication that the trend is changing on the upside. Also, the low of the candle should be above the prior low. So low greater than the prior low, and the high should be above the prior high. High greater than the prior high. ठीक है? Now 3 conditions satisfy होनी चाहिए. 3 conditions should be satisfied. Condition 1, close should be greater than the prior high. High should be greater than the prior high,
and low should be greater than the prior low. This will indicate that the trend which was there on the downside, short term mein, it has changed on the upside. Okay, with that logic, we are right now into the phase where, if you look at this move from this candle, can I say from the top of 18,200, not a single candle until 15,600 का जो low बना has closed above the prior candle high. Clear है? And only here we saw the close of the candle above the prior candle high. Wow, मतलब जो भी चीज यहां से शुरू हुई थी एटलीस्ट वो पॉज होके खत्म हुई है. तो फिलहाल मार्केट, कैन आई से, शॉर्ट टर्म में बाय में है. ओके, क्या मैं बोल सकता हूं बाजार बाय में है? वाई? बिकॉज वी हैव नॉट सीन अ क्लोज बिलो द प्रायर डे लो. व्हेन विल इट टर्न ऑन द सेल साइड? सेल साइड में टर्न होने के लिए वी रिक्वायर अ क्लोज बिलो द प्रायर कैंडल लो. सो वी हैव अ क्लोज, ये कैंडल का क्लोज, ये ग्रीन कैंडल का क्लोज अबाउट द प्रायर कैंडल हाई. द हाई ऑफ कैंडल इज प्रायर कैंडल हाई एंड द लो ऑफ द कैंडल इज प्रायर कैंडल लो. इसका मतलब ये तीनों कंडीशंस यहां सेटिस्फाई हुई. इसका मतलब शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड बाजार का ऊपर का है. इट इज अ वेरी सिंपल एंड पावरफुल मेथड टू आइडेंटिफाई if the trend is on the upside or downside. Can you see that? Is it clear to you? In fact, try and look at this method. So powerful. यहां पर अगर आप देखोगे from that 14,200 level, 14,200 level से, do you see any close below the prior candle low? Let me just clear off this drawing here so that ये थोड़ा clear हो जाए. Do you see from the low here, do you see any single close previous candle low के नीचे until here? Which means यहां से 14,200 से you are right now at 17,500 तक, nearly around 3,500 points आपने कैप्चर किया, क्योंकि not a single weekly chart has closed below the prior candle low. You need all the three conditions to be satisfied for trend to change from down to up. Exactly opposite होगा जब ट्रेंड ऊपर से नीचे टर्न होना है. तो यहां पर आप देखोगे we saw a close below prior candle low, the high is below the prior candle high and the low is below the prior candle low, which means यहां से यहां तक में इस लेवल पे ट्रेंड changed from up to down. Is it clear? Can you see that happening most of the occasions? I'm not saying all. See, this is market. आप अगर यहाँ पर ये सीखने आए कि 100% ऑफ द टाइम आप सही होगे तो आप यहाँ पर कुछ सीखने वाले नहीं. रिमेंबर, इट्स अ प्रोबेबिलिटी. ये साइंस है, ये एक मेथड है. इट्स अ प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो क्या मैं बोल सकता हूं ऑन दिस सिंपल लॉजिक एंड फंडा, इफ इन द कमिंग वीक, आने वाले सप्ताह में, इन कमिंग वीक 17,000 के नीचे अगर इंडेक्स क्लोज होता है ऑन अ वीकली बेसिस विथ ये वाला हाई प्रोटेक्टेड विच इज 17,420 का हाई बना रहा और क्लोज 17,000 के नीचे हुआ, कैन आई से दैट नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड ऑन द डाउनसाइड? नहीं तो फिलहाल मार्केट में बाय ऑन डिप्स करके पैसा कमाना है. क्लियर है? बहुत ही सिंपल टेक्निक मैंने आपको एक बता दी एंड इस टेक्निक को मंत्र के तरह यूज करो. खाली इसी पे ट्रेड नहीं लेना है भाई. सी, वी वांट टू कंबाइन दिस विद टाइम साइकिल. टाइम के साथ चलना है, क्योंकि टाइम के बिना अगर आप ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा. ऐसा हुआ है आपके साथ कि यार मस्त पैटर्न देखा, वी सॉ अ वेरी गुड पैटर्न ब्रेकिंग आउट ऑन द अपसाइड एंड इट डिड नॉट वर्क. बहुत हाई कन्विक्शन था. Why? Because you are not trading in sync with time.
So trading in sync with time is very, very important. Is it clear? Is it clear, everyone? So now we will change the time frame and we will look at the other charts also. So for now, what I want you to understand is this. चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं. Then we will go on the practical chart. I want to show you something very, very interesting. We are then going to go on a practical chart. हम apply करेंगे. Don't worry on that. I am not going to leave you unless ये पूरे को हमने apply ठीक से किया. यहां पर चलते हैं. I want to show you something fantastic. ठीक है. Now if you look at this chart, you will understand that very clearly कि overall this was done on 20th of January before our मास्टर ऑफ वेव्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. वो दौरान हमने उन दिन पे ये निफ्टी का पाथ डेवलप किया था जो हमने एलियट वेव और टाइम के बेसिस पे था. एलियट वेव पे हमने देखा निफ्टी शुड गो अप, कम डाउन एंड देन शुड गो अप. यू नो बजट भी था, एवरीथिंग वाज देयर. तो बजट फर्स्ट फेब को था. ये पाथ 20th जनवरी को बनाया गया था. ऐसा हुआ क्या देखते हैं. लुक एट दिस, लुक एट दिस. यू कैन सी यहां से ऊपर आया, यहां से नीचे आया, यहां से ऊपर आया. Fantastic, right? Kulapali, Tarun, these are all the people from that Master of Waves program, and they can clearly vouch for कि this is how it market behave. देखो ना, मैंने क्या बनाया था. ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद का पाथ यहां बनाया हुआ है. This was the budget. In fact, budget पे मैंने कहा था that since it's an Amavasya, it's a lunar cycle. Amavasya means that something changes basis of lunar, and Amavasya will result into a positive close on a budget day. And fantastic the way it functioned. Post this, it was shown the possible path of Nifty is going to be this way. And you know the low mentioned here is what? 16,200. Do you know when was the announcement of Russia-Ukraine war? Russia-Ukraine war happened on 24th of February. जो यहां पर था. The path was shown on 3rd of February. So, which means that this was already forecasted that this is how Nifty will behave. Forget about Russia-Ukraine war होगा कि नहीं होगा, that is we don't know. But this was forecasted. मतलब ऐसा prediction कर सकते हैं हम. Okay. Prashant is saying this is my 20th webinar. Simply astonished. Thanks. So ये चार्ट को देख के सोचने वाली बात क्या है? The most important thing to understand is that this was supposed to anyways happen. Otherwise ये blueprint कैसे ready हो सकता था? You know when you have to construct a building before or an architecture or a monument, उसके पहले एक blueprint ready किया जाता है. So this was the blueprint that market शायद ऐसा कर सकता है. Understand my words very carefully. मैंने आज तक ऐसा नहीं बोला ऐसा ही होगा. What I am saying is market ऐसा कर सकता है. And this blueprint was made on 3rd of February, much before the Russia-Ukraine invasion happened. And this is where the Russia-Ukraine invasion happened. देखना है, and 16,200 का लेवल भी मार्क किया हुआ है. देखना है क्या हुआ उसके बाद. Let's just check that. Look at this. First of all, जो 20th Jan we marked a complete sideways action exactly that way. On 3rd of Feb we marked this is how markets will behave exactly that way. And this was Russia-Ukraine invasion. And look at the low from there. Nifty reversed back to this point and then started going down. 16,200 से reverse हुआ and then the market started going exactly the way we behaved or expected it to behave. So क्या market ने अपने blueprint को follow किया? Fantastic. So why I get astonished myself is that कि अगर ऐसा होना ही था तो क्या रशिया यूक्रेन इन्वेजन नहीं भी होता, still market would have done that? Yes, yes. लेकिन
क्या चेंज होता है? आई टेल यू, दिस आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एनीवेयर एवर, आई एम डिस्क्लोजिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई टेल यू, रशिया यूक्रेन नहीं होता तो मार्केट में क्या होता, और रशिया यूक्रेन हुआ तो क्या हुआ। लिसन इट वेरी केयरफुली। रशिया यूक्रेन अगर नहीं होता, मार्केट ने अपना ब्लूप्रिंट तो प्रिसाइज फॉलो किया। देखो, ब्लूप्रिंट फॉलो हुआ प्रिसाइजली, जैसा सोचा वैसा ही हुआ। लो भी 16,200 पे बना। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन इन्वेजन नहीं होता तो कैसे फॉलो होता? आई विल शो यू नाउ। इट वुड हैव कम हियर, देन इट वुड हैव गॉन अ लिटिल स्लोअर। दिस इज हाउ दिस वुड हैव हैपेंड। इसका मतलब जो चीज 20 दिन में होने वाली थी, वो चीज एक दिन में हो गई, बिकॉज ऑफ द इवेंट। होना तो था ही, but what was supposed to happen in 20 days or 25 days happened in 1 day of time. That is how it changed. That is what event does. It only speeds up the process. समझ में आया? कैटलिस्ट मतलब समझ में आता है? एनीवन? आई एम एन इंजीनियर, सो आई वर्कड ऑन साइंस। सो कैटलिस्ट, सोचो ना, मैं इंजीनियर हूं और मैं फाइनेंस स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। आई हैव ऑथर्ड अ बुक आल्सो, सो इफ आई कैन डू इट, यू कैन एज वेल। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आपने आग में घी डाल दिया तो वो आग तेज पकड़ लेती है, विच मीन्स दैट इट जस्ट एम्पलीफाइज इट। एम्पलीफिकेशन बोलते हैं इसको। सिमिलरली, व्हाट वाज सपोज टू हैपन इन 20 डेज, मे बी एक महीना लग जाता, इट जस्ट एक्सिलरेटेड द प्रोसेस एंड दैट हैपन इन 1 डे। बट हुआ तो वही जो होना था, which means what is going to happen is already written, it's destined। ऐसा नहीं लगता आपको? जो होना था वो हो रहा है, हम तो खाली प्ले कर रहे हैं उसी चीज में। यू नो, जस्ट ऑफ द ट्रैक, महाभारत was already written to be happening in that way, and then the Mahabharata happened। this is for someone food for thought, सोचने वाली बात है, ठीक है? That's how it works, right? That's how the magic of time is। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लूनार साइकिल के बारे में बात करेंगे। बेसिस ऑफ द लूनार साइकिल ऑल्सो वी प्रेडिक्टेड, और दिस इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट दैट 1st of Feb को, रिमेंबर अगेन, आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, 1st of Feb, this is basis of lunar cycle। We are going to look at the lunar cycle on the chart very soon, but just focus here for once on the basis of lunar। lunar matlab moon, these are moon cycles। I will explain you, don't worry, I'll explain you lunar cycle क्या होता है। But on the basis of lunar cycle and on the basis of wave pattern, it was expected that the move on the upside will start। This was before the budget, this was around end of the end of January, around this point, कि यहाँ से consolidation होगा and then we will see a move back on the upside towards that 17,800 mark। ऐसा हुआ क्या? Let's just check that precisely। Look at this, look at this। This was when the prediction was done, sideways हुआ market, went up, look at the level 17,800, and it turned back down here, here, crash 16,200, and that's how we went। समझ में आया? So बहुत ही important है। This is what I want to show you, it works। This is to showcase that ये चलता है यार। These cycles of lunar works, wave theory works, and the blueprint of market is ready। We should know how to read it। This is the language of the market। Okay, it's very important। This is the language। John is saying 10:45 AM हमने लास्ट वेबिनार में प्रेडिक्ट किया था, एंड 10:45 AM को बैंक निफ्टी ने वहां से 600 पॉइंट का रैली किया। यू नो दैट वी प्रेडिक्टेड दैट टाइम वे बिफोर on the webinar like this one, and we are going to do that again today। so चलते हैं चार्ट की ओर। shall we go on to the practical chart now? I want to know that before I move on to the practical chart, how is the session so far? How is the session so far? Is it not astonishing? We are going to open up a practical chart। how are you finding the session so far? Is it excellent, fantastic, every one of you? Okay, you can even mark it to everyone so that everyone knows there are so many of you। so how is it so far? Is simply fantastic, right?
जबरदस्त, आई ओपनर, ग्रेट, ब्रिलियंट, इफेक्टिव। चलिए, अगर इतना अच्छा सेशन है तो क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करना चाहते? वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल चार्ट ऑफ हाउ टू अप्लाई दिस टेक्निक, एंड हम 5 मिनट्स तक जाएंगे, ठीक है, एंड उससे ऑप्शन डिराइव करेंगे, ट्रेड करेंगे। So we are going to do that. Simply, what I want you to do is that I want you to invite your friends, family members on this. कैसे invite करना है? The link for inviting is here. You can simply click on this link. वो link को copy करो and share करो। Meanwhile, मैं मेरा चार्ट ओपन करता हूँ, प्रैक्टिकली लेटेस्ट वाला। वहां पर हम 15 मिनट 5 मिनट सब पे जाके देखेंगे साथ में। So I'm opening that up. In meanwhile, just ensure that you are inviting. Okay, I can see Ulapali, you have already invited, right? Many. Great. I can see that. Okay, I can see Mitesh has shared across on the Telegram groups. Fantastic, Mitesh. Thanks for doing that. मुझे बस 1 मिनट दो. Let me just move on and open up the trading view. I'm sure everyone is comfortable with trading view, so I'll just open up trading view now and share that screen across. So just give me a second. My Telegram channel is AK Trading Gurukul. Rajesh Soni is saying I'm already invited 300 plus persons. Fantastic. And people who are there on YouTube, if you want to be a part of this, you can simply do that. Sunil Alavde, welcome, very warm welcome here. Thank you. तो यहाँ पर just 1 second. Thanks Anand and Hussein. Fantastic. Thank you very much. Very glad. ठीक है, चलिए अभी मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं एंड एक ही सेकेंड, मेरा ट्रेडिंग व्यू कहाँ गया? मैं एम जस्ट चेकिंग दैट. So what you have to also understand, meanwhile I'm opening and setting up my chart, do see the Twitter channel. Okay, I'm going to share across the screen here again, because that's very information and very effective. So I have tweeted yesterday also, as a trader most important thing kya hai. So this you can see on my Twitter channel. Also very important is that you will see various levels that I keep posting, keep sharing across, and market mein FIS ka kya ho raha hai. So ensure you are following me on my Twitter channel. This is the screen that I'm sharing of my Twitter, @Ashish. Very interestingly, okay, so this is the example I shared on Twitter, because many said I resemble like Putin. I don't know. मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, बट काफी सारे जनों ने बोला, and there are comments and liking and things, so I don't know, I have no clue. So this is how it is. And I want to share across something important, which is the tweet I did in the morning कि market कैसे behave होगा in the morning. That this is what was tweeted on 24th of March. देखो, by 9:30 9:45 a candle will confirm price and time confluence. मतलब 9:30 बजे के आसपास से मार्केट ऊपर जाना चाहिए. So exactly on Thursday at 9:30 निफ्टी गैप डाउन हुआ 150 पॉइंट्स नीचे, और वहीं से रैली होके started going up on the upside by 160 points in that 15 minutes. So it's very important you understand that. So this is on the Twitter handle, and मेरा website है wavestrategy.com. ensure you anything you go here, there is an article section. The reason I'm showing you this is because there is lot of things I keep posting on the website as research, which can simply change the way you look at the market, and also look at those ways of identifying the reversals of the trend. So यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में mentioned है, levels mention किए हुए, and everything is mentioned here. So ensure you use this website for various research articles. There are various research articles being published. You can find it here. You can go to page 2 also and see various research. See, Nifty crashed precise Elliott wave and Fibonacci basis of that. So this crash कैसे possible था predict करना? देखो, in fact, you look at this, I have also mentioned and showed how
what should be the path of the crash? Can you see that over here, entire here, basis of various aspects, and look at the crash here, precisely the way it's expected. So ये रिसर्च सब आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए अभी मैं ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करता हूं। आई वांट टू शो यू ऑन ट्रेडिंग व्यू। हियर इज माय स्क्रीन। देन थैंक्स एवरीवन फॉर इनवाइटिंग over here right now. Can you see my screen? ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिख रहा है आपको everyone clearly? Okay, so very important is that you look at this chart very carefully, ठीक है। मैं इसको zoom in करूंगा। I'm going to zoom this in। यहां पर जो टेक्निक हमने अभी सीखी है, सेम टेक्निक पे ट्रेड कैसे लेना है, कैंडलस्टिक की ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक। आई एम श्योर आपको कैंडलस्टिक अभी तक पता होगा, लेकिन हैव यू एवर विटनेस्ड कि इस पे ट्रेंड कैसे लेना है, हमें ट्रेड कैसे करना है? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। ओवर हियर कैन आई से दैट फ्रॉम हियर द ट्रेंड रिवर्स्ड ऑन द अपसाइड? Can we say that trend reversed on the upside? After this reversal, tell me, look at it very carefully। हाँ, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या थ्री कंडीशंस है? क्या थ्री कंडीशंस है नीचे के ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए? फॉर द डाउन ट्रेंड टू स्टार्ट, व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? क्लोज हैज टू बी बिलो द प्रायर लो। ओके, the low of current candle has to be below the prior low, and the high of the current candle has to be below the prior high. These three conditions has to be satisfied completely. Only if these three conditions are satisfied, we can say the trend has changed। इसका मतलब क्या हुआ? ये दो कंडीशन का मतलब हुआ लोअर हाई और लोअर लो बनना चाहिए, और ये कंडीशन से कंफर्मेशन मिला। Everyone, is it clear? How do we confirm? We use these three candle technique। Basis of these three candle technique, we will be able to confirm। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। Close has to be below prior low, low has to be below prior low, and high has to be below prior low। ये रिवर्सल नीचे के साइड का जो पहले हमने देखा था वो अपसाइड रिवर्सल के लिए था। इज इट क्लियर? क्लोज हैज टू बी ग्रेटर देन प्रायर हाई मतलब हो गया नीचे से ऊपर के ट्रेंड के वक्त, ये अभी ऊपर से नीचे के ट्रेंड के वक्त कर रहा है। एवरीवन ओके? नाउ बेसिस ऑफ दिस, फ्रॉम द लो ऑफ 15800, डू यू सी these three conditions satisfied, yes or no? Look at it। why I am doing this is, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नहीं समझेगा। इसलिए यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट आई ऑन द चार्ट। लुक एट इट। मैं वापस से बता रहा हूं, क्या आपको एक भी क्लोज प्रायर लो के नीचे मिला है क्या? फैंटास्टिक जितेंद्र, मुदासर, भागीरथ, राहुल, तरुण, लवली, फैंटास्टिक। नीलेश, सुपर। नहीं मिला। एपी, राजेश, दत्ता, ग्रेट। नहीं मिला। क्यों? देखते हैं। फ्रॉम हियर व्हेन वी स्टार्ट, वी कैन सी दैट not a single close is below the prior candle low। ये वाला क्लोज क्या मैं बोल सकता हूं प्रायर कैंडल लो के नीचे था, but is not satisfying the conditions because this high is above the prior high, which is this condition not satisfied। it's an outside candle, it's a bearish engulfing। लेकिन bearish engulfing पे ट्रेड नहीं करना है बॉस, because I have seen so many candle practitioners, you will not believe, I have seen so many of them who trade basis of this bearish candle turn super bearish
एंड मार्केट नेक्स्ट डे ही रिवर्स हो जाता है। बहुत सारे जन को मैंने देखा है, ओके, एंड इट इज सिंपली अमेजिंग। Abulu Chaudhary is saying you are doing excellent service. I participated in your MOW class. Fantastic. So bearish engulfing का कंफर्मेशन मिलेगा आपको नेक्स्ट कैंडल पे, तो शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली बुलिश एंगल्फिंग पे भी नहीं करना है। नाउ लुक एट द मैजिक फ्रॉम दिस पॉइंट। सेम कंडीशंस पे मैं आपको बता रहा हूं, ये एक मैजिक है। लुक एट इट फ्रॉम हियर, नॉट अ सिंगल candle has closed except here। देख पा रहे हो, ये अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देके आपने बाय कर लिया होता तो आपका गेम ओवर हो जाता नेक्स्ट थोड़े दिनों में, बिकॉज दीज थ्री कंडीशंस आर नॉट satisfied। So that's why I'm saying that you have to understand, है ना मैजिक, इट्स लाइक अ मैजिक। वापस देखो, ध्यान से देखो, फिर हम करंट मार्केट स्ट्रक्चर पे आएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? सो अबुला इज 75 years of age। वाह, फैंटास्टिक। चलिए अभी करंट मार्केट स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहां से एक भी कैंडल नीचे की तरफ, तो अगर आपने शॉर्ट किया होता मार्केट को 17,400 के आसपास, आपने कवर किया होता अराउंड 16,200 के आसपास भी कवर किया, 400 पे भी 1000 पॉइंट मिला आपको। आपने अगर 16,400 पे भी बाय किया, 300 पे बाय किया होता, आपको नियरली 1000 पॉइंट ऊपर भी मिला, नीचे भी मिला। व्हाई? बिकॉज यहां पर देखिए, not a single candle has actually closed below the prior candle low until now। Isn't that a very simple powerful method for you to trade the market? अगर आप ऑप्शन बायर है, before I move on to options, I want to know from here how many of you are options trader, because now we will enter into the world of option trading। I have launched a poll very quickly, how many of you are trading options here? Okay, fantastic, I see so many of you are trading options। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको खाली कुछ नहीं करना है लाइफ में, 315 को जाके देखना है कि ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अगर हुआ है, then you will exit your option, otherwise continue to carry it, and you would have made 1000 points on Nifty, imagine, without complicating it। लेकिन आप बोलोगे यार मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूं, आई एम नॉट अ पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चलते हैं। आई एम एंडिंग द पोल नाउ। सो मेनी ऑफ यू आर ट्रेडिंग ऑप्शन। तो यहां पर अगर आपने 16,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया होता, आप 17,200 पे, और अभी भी एग्जिट सिग्नल नहीं है, दिस इज व्हाट आई कॉल अ मेथड, अ स्टाइल, अ ट्रेडिंग टूल। नाउ आई एम गोइंग टू गो ऑन अ आवरली चार्ट, 1 आवर कैंडल पे। Okay, I'm going on an hourly chart। You have to see it on a daily chart। You can see it daily chart। ये daily chart था, तो आपको daily end of the day देखना है। Okay, and hourly chart पे जा रहे हैं। So very clearly I'll again explain very clearly। Abdul is saying eye opening। ठीक है, वही कैंडलस्टिक सब देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ आवरली कैंडल्स चार्ट के बेसिस पे। ये कल का दिन था, समझो, ये कल का दिन था, 2 डेज पहले का था। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे 2 या 3 डेज पहले पे, यहां से टॉप बना ओपनिंग कैंडल पे, एंड देन द ट्रेंड कंटिन्यूड ऑन द डाउनसाइड थ्रू आउट द डे। कैन यू सी दैट अंटिल दिस कैंडल? क्लियर है? सी, साइडवेज मार्केट में ये बहुत ट्रिकी हो जाता है। सो ये जो दिन था, ये साइडवेज मार्केट वाला था, उसमें आपको बाय सिग्नल भी मिला, सेल सिग्नल भी मिला, और थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा गया। टू बी ऑनेस्ट, करना क्या है जब नुकसान हुआ? व्हेन वी लूज लेस, व्हेन वी मेक मनी वी मेक मोर। इज इट क्लियर? सो व्हेन वी लूज लेस, व्हेन वी मेक मनी वी मेक मोर। अगर यही कंसेप्ट पे आपने फ्राइडे को देखा होता,
Can I say this is a bearish candle? Are you with me? And throughout the day, look at this. Throughout the day, until the final closing, can I say, अगर आप शॉर्ट है तो फाइनल क्लोजिंग आवर पे एग्जिट करना है. साइडवेज में लूट नहीं जाएंगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा. तो यहां जब लॉस हुआ तो बहुत कम हुआ, लेकिन यहां जब पैसा बना, ये अप ट्रेंड में देखो वन साइड, ये डाउन ट्रेंड में देखो वन साइड, ये डाउन ट्रेंड में वन साइड. तो कैन आई से व्हेन आई लूज लिटिल बट व्हेन आई मेक मनी आई मेक बिग मनी. क्लियर हुआ कि नहीं? Are you with me? Same thing I did on CNBC hours to win that Khiladi number 1. When I lost 2%. I lost 1%. I lost little, 1.5%. And can you see when I made 12.5% on Angel 1. I made 9% on another stock. I made 5% on other stock. Game done. एक दिन में नेगेटिव से 21%, मतलब 30% का गेन एक दिन में किया मैंने. 30%. यू थिंक दैट्स अ जोक? यू थिंक इफ आई कैन डू इट, कांट यू डू इट? बॉटम लाइन क्या है यार बॉस, मेरे पास आईक्यू नहीं है इतना. आई एम अ स्लो लर्नर. आई टेक टाइम. समझने में टाइम जाता है, डाइजेस्ट करने में टाइम जाता है. आई टेक लॉट ऑफ टाइम टू बी ऑनेस्ट. लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो आई डू इट विद डिसिप्लिन. सो मैंने स्टार्टिंग से यही कहा है, यू विल लूज, but when you lose less. When you make money using this technique, you will make a killing. Clear है? समझ में आया? Shall we go on a 15-minute chart now? चले आगे 15 मिनट के चार्ट पे चलते. Now similar to that, you can apply this technique on a 15-minute chart. You can apply it on a 5-minute chart. You can do that and it will work. You can do that and it will work very, very well. It will work very well. Clear है? So फिलहाल थोड़ा और इसमें अप्लाई करना पड़ेगा. So यहां से टारगेट नहीं मिलेगा हमें. ठीक है? You can even go on a 5-minute chart and try and apply this thing. हम फिलहाल अभी उसमें नहीं जा रहे. What we want to see is now basis of this understanding, we want to understand कि कैसे टाइम के साथ इस टेक्निक को कंबाइन किया जा सकता है. Okay, so like I said, you have seen on an hourly chart, it works like magic. So Monday को opening our candle strategy के हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है देखते हैं. Can I say this is the bullish candle, close above the prior high, high above the prior high, low above the prior low. So can I say that the overall trend, at least over very short term as an option trader, is upside? Clear है? Now Monday, let's wait for the candle to open and form. If Monday 10:15 तक bullish candle बना, until 10:15 I'm saying, if you see a bullish candle forming and उसके बाद ये candle ने high निकाला, go and buy. Stop loss will be first hour candle का low. I'll again repeating. Monday, how do you trade in an option? Suppose when I see a close which is bullish above the prior candle high, and after 10:15 this high is taken out, you can go and buy call option, keeping this as a stop loss. The strike of the call option has to be in the money, 17,200 वाला. Is it clear? स्टॉप लॉस के साथ काम करना है. ठीक है? लेकिन ये हम कॉल बाय कर रहे हैं. सपोज मंडे का कैंडल बेरिश बना, बेरिश कैंडल, ठीक है, एंड द नेक्स्ट कैंडल टेक्स आउट द लो, लोअर हाई लोअर लो, ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड. समझो वैसा हुआ. I'll again repeat, just keep focused here. If we see a bearish candle forming on a Monday, with a lower high and a lower low formation, I am going to be selling a call option and not buying a put option. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं.
मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। कौन सा वाला कॉल ऑप्शन सेल करेंगे हम? ये वीक के एक्सपायरी का 17,400 या 17,500 वाला कॉल ऑप्शन सेल करेंगे इंट्राडे ट्रेड के लिए भी। आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी हम वही चीज करेंगे, बिकॉज वी आर सेलिंग आउट ऑफ द मनी कॉल, नॉट बाइंग पुट। कैन समवन टेल मी क्यों हम बाय करते वक्त तो कॉल बाय करने के लिए रेडी है, लेकिन मार्केट जब नीचे जा रहा है हम पुट क्यों बाय नहीं कर रहे? सोचो। देखो मैंने आपको सब कुछ बताया है, अभी सोचो। आई नो विक्स इज हाई नहीं, प्रीमियम ईटिंग यस, लेकिन क्यों? क्यों? सोचो। टाइम डीके तो दोनों में है ना, तो क्यों कॉल बाय कर रहे हैं हम जब ऊपर जाते वक्त? बिकॉज द मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव। ओके मंजीरी, फैंटास्टिक। क्यों अप है मेजर ट्रेंड? कौन से बेसिस पे डिसाइड किया आपने ट्रेंड ऊपर है? What basis did you decide the trend is up? Not weekly. Nilesh, you are close, but not weekly. Daily, fantastic. Fantastic. गौरव, मंजीरी, रवि, सुपर। क्यों डेली चार्ट पे मुझे बताओ, क्या आपने देखा है एक भी क्लोज प्रीवियस कैंडल के नीचे हुआ है क्या? नहीं हुआ है। विच मीन्स डेली ट्रेंड कहना इसे बाय पे है। डेली ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अगर डेली ट्रेंड साइडवेज टू बाय पे है, तो अगर ब्रेकआउट चांसेस कौन से साइड अभी ज्यादा है आएगा? तो बेसिस ऑफ डेली कैंडलस्टिक टेक्निक अपसाइड। एज ऑफ नाउ मंडे चेंज हो सकता है। सो कहना इसे आई कैन टेक चांस बाय बाइंग अ कॉल ऑप्शन फॉर एन अपवर्ड मूव। इन केस ब्रेकआउट आ गया, हम जल्दी ही बाय करें, ब्रेकआउट आ गया तो मस्त ट्रेंड मिल जाएगा। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं आई एम सेलिंग अ पुट ऑप्शन, सॉरी सेलिंग अ कॉल ऑप्शन अगर नीचे का ट्रेंड है, बिकॉज मार्केट में नीचे से बार बार बाइंग आ रही है। कैन यू सी दैट? एंड एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट एक भी कैंडल क्लोज प्रीवियस डे के लो के नीचे हुआ ही नहीं है। फ्राइडे भी अटेम्प्ट था, कैन यू सी? ये अटेम्प्ट था, लेकिन क्लोज किया क्या? सोचो ना। आर यू विथ मी? कुछ समझ में आया? द फंडा, द साइंस। डेली पे बायस पॉजिटिव है, आवरली पे इसके लिए हम कॉल बाय करेंगे, लेकिन कॉल सेल करेंगे बेरिश के लिए। फैंटास्टिक राइट सुमन इज सेइंग। सो अभी चलेंगे हम यहां से टाइम की ओर। सोचो ना कैसे मैंने सिंपल में डेली कैंडल को आवरली के साथ लिंक करके ऑप्शन में एक स्ट्रेटेजी बना दी। वापस रिपीट करता हूं। डेली में क्योंकि हमने एक भी क्लोज कैंडल का प्रीवियस लो के नीचे नहीं देखा है, इसका मतलब फिलहाल डेली के ट्रेंड के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है। एंड आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड आपको ट्रेड करना है। मतलब बाइंग आपको पैसा ज्यादा कमा के दे सकती है। ठीक है? सो इसके लिए आवरली चार्ट पे जब हम जाते हैं, तो अगर यहां से ब्रेकआउट आएगा तो बाय का ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी विल बी प्रीफरिंग बाइंग कॉल ऑप्शन, बिकॉज डेली ट्रेंड पॉजिटिव है, डेली ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। अगर मुझे बेरिश ट्रेड लेना है ऑन दी फर्स्ट आवर कैंडल, आई विल प्रीफर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, बिकॉज मार्केट साइडवेज टू ड्रिफ्टिंग होगा डाउनवर्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन नहीं जाएगा, साइडवेज टू ड्रिफ्ट हो सकता है। इसके लिए सेल करके पैसा बनाएंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को। इज इट क्लियर? ओके, मोहन इज सेइंग आशीष मींस ब्लेसिंग्स, यू आर ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस। ओके, आई एम कंफर्टेबल सेलिंग ऑप्शंस रेदर देन बाइंग अनलेस आई एम श्योर ऑफ द ट्रेंड। फैंटास्टिक देवेश। सो अभी चलेंगे हम टाइम की ओर। आई वांट टू आस्क यू हाउ इज इट नाउ? ये टेक्निक हाउ इज इट? आज तक कैंडलस्टिक देखी थी, लेकिन हाउ इज इट सो फार? ओके, सो आई वांट टू नो अगेन फ्रॉम यू, इज इट नॉट एन आई ओपनर? हाउ इज इट सो फार? फैंटास्टिक राइट? उम्मीद की किरण ऑसम। क्योंकि हर जन बात करते कॉम्प्लिकेट करने की, मैं बात कर रहा हूं ये सिंपल है। एवरीवन कैन डू इट। ओके, एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट।
एंड बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, फैंटास्टिक, राइट? हर चीज मिलेगी आपको ये सिंपल मेथड यूज करके। अभी हम चलेंगे टाइम की ओर एंड मैं शेयर करता हूं। सो मीनवाइल मैं आई एम गोइंग टू स्विच बैक टू माय स्क्रीन and we are now going to look at how to be a time trader. So chaliye, fantastic, eye opener, right? Thank you very much. So meanwhile मैं वहां जा रहा हूं, तो please ensure you are inviting more people, let them learn now about time. I'm going to share my screen here. टाइम पे चलते हैं। टाइम पे चलने के पहले मैं एक काम करता हूं, आपको यहीं पे एक साइकिल के बारे में बताता हूं जो है लूनार साइकिल। इसी चार्ट पे लेट मी शो यू अ साइकिल विच वी कॉल एज अ लूनार साइकिल, ठीक है। लूनार साइकिल के बारे में बात करते हैं। लेट मी जस्ट, अच्छा आप स्क्रीन वही है, 1 सेकेंड, ओके। Heard a lot about that new trader should trade in hourly chart. Now learning why this is said. Exactly, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर से यहां डेली पे जाना है। लूनार साइकिल पे जाने के पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, वो एक ही सेकेंड। मीनवाइल आप क्यों नहीं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करो, लेट देम सी दैट दिस इज मैजिक द वे इट फंक्शंस। सो दिस इज अ साइंस, एज आई से दिस इज अ साइंस ऑफ ट्रेडिंग। हर जन बोलता है साइंस नहीं है, ये गैम्बलिंग है। मैं बोलता हूँ ये साइंस है। आपको पता होना चाहिए कि ये साइंस कैसे चलता है, ओके। दैट्स अमेजिंग, राइट? यू आर टॉकिंग टू अस हु इज ट्वीटिंग, दैट्स अमेजिंग इज व्हाट मोहम्मद इज सेइंग। यस, चलिए एक और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। सो जैसे कि मैंने कहा था, आप एस्टोनिश हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। हम यहाँ पर है, दिस इज अ रिसर्च विच इज पब्लिश्ड ऑन 25th of July 2013 में एक रिसर्च पब्लिश की थी मैंने। दिस रिसर्च वाज पब्लिश्ड ऑन 25th of July 2013, 2013 के साल में पब्लिश की थी। क्या रिसर्च थी और मैं ये क्यों बता रहा हूं आज के दिन? ये रिसर्च में मैंने फोरकास्ट किया था दैट सेंसेक्स will touch the level of 61,000 on the upside. Okay, Sensex will touch 61,000, touch 61,000 level on the upside. So that is very very important to understand कि कैसे किया था। ये देखो टाइम के बेसिस पे किया था मैंने एक तो, एंड आई हैव आल्सो मेंशन्ड, come down and see here what was mentioned, ये पूरा रिसर्च है, that Sensex can touch the level of 61,000 by 2020। 272 वीक्स का बॉटमिंग साइकिल होगा, ओके। बेसिस ऑफ दिस टाइम साइकिल थोड़ा सा अगर 10% का लीवे दिया, विच मीन्स दैट दिसंबर 2020 से अगर 27 वीक का लीवे दिया, तो बाय जुलाई 2021, आई एम अगेन रिपीटिंग, by July 2021 Sensex will be 61,000 level, you know। जुलाई 2021 पे सेंसेक्स 61,000 लेवल होगा, ऐसा प्रेडिक्ट किया था 2013 के साल में। यहां पर आते चार्ट में, ओके। लेट्स जस्ट लुक एट दिस नाउ। इमेजिन सेंसेक्स का चार्ट देखते, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि कैसे ये पॉसिबल था प्रेडिक्ट करना 2013 के ईयर में, कितने साल पहले, ओके। यहां पर आप देखोगे, ये वीकली चार्ट पे आते हैं, यहां तो डेटा भी नहीं आ रहा उतना, ओके। यहां पर आते हैं कि 2013 के जुलाई महीने कहां था, जून जुलाई, ये रहा। दिस वाज द डेट, दिस वाज द पीरियड when it was predicted, this was the period 2000 July 13, 2013 में, that Sensex will be 61,000, this is 61,000 by 2022 July। वाव, हियर ये देखा टॉप, ये 61,000 है,
दिख रहा है, वहीं पे टॉप बना है। और ये कब हुआ मालूम है? अक्टूबर 2022। कैन यू इमेजिन? दिस वाज डन, प्रेडिक्टेड हियर, एंड यहाँ पर टॉप बना भी 61,000 पे अक्टूबर 2022 में, और वहीं से सेंसेक्स नीचे आया। 61,000 को थोड़ा क्रॉस करके ओवरशूट हुआ, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन टारगेट था वो। और ये हुआ डिस्पाइट ऑफ दिस पेंडेमिक क्रैश, डिस्पाइट ऑफ यूएस इलेक्शन, डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिस्पाइट ऑफ आरबीआई एक्शन, डिस्पाइट ऑफ मोदी विनिंग, पेंडेमिक, कोविड क्रैश, सब चीज के बावजूद, this was 2021, I'm so sorry, this is 2021, अक्टूबर 2021, 2022 तो अभी चल रहा है। अक्टूबर 21 में हमने ये टॉप 61,000 पे यहां से प्रेडिक्ट किया और यहां तक आ गए। है ना ये जादू? isn't it a science? what I am saying is, it is possible to do that. if you are an investor, this is for every one of you. ठीक है, आगे चलते, this will be further astonish you. बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को कोई प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है, ऐसा लगता है ना। बैंक निफ्टी तभी चल रहा था 12,000, सेंसेक्स 18,000 था। ओके, बैंक निफ्टी वाज एट 12,000 लेवल। एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी विल टच 40,000। ओके, फ्रॉम 12,000 लेवल टू 40,000, it was expected bank nifty should do that. You know what I mentioned in that research on July 2013? Bank Nifty will touch 40,000 might sound irrational or crazy at this point of time. Crazy. You know, I've written that. ये research में लिखा है कि this will be a crazy outlook and figure that you see as 40,000 on Bank Nifty. सोचो कोई आपको उस जमाने में बोला होगा कि बैंक निफ्टी 12,000 चल रहे, 40,000 हो जाएगा, एंड पेंडेमिक भी था। चले बैंक निफ्टी देखते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं अभी, एंड वी विल देन स्टार्ट लुकिंग एट बैंक निफ्टी इन मोर डिटेल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग आल्सो। वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, प्रेडिक्शन किया कहां था? लेट्स जस्ट लुक एट दैट। इट वाज जुलाई 2013। कहां था वो पीरियड? दिस इज अराउंड दैट पीरियड ऑफ जुलाई 2013। यहां से बैंक निफ्टी देखो 40,000 again touched in 7 to 8 years of time. 2022 was the period given. July 2022, bank nifty touched 40,000 by October 2021. I'm so sorry, July 2021, October 2021 में बैंक निफ्टी ने वो लेवल टच किया। सोचो वो लेवल से, डिस्पाइट ऑफ दिस क्रैश हैपनिंग। So what is the entire aim of understanding this science? Is that how is it possible? Which means, as I said, something which is supposed to happen is anyways going to happen. ऐसा नहीं है, मतलब already blueprint is ready of the market. We are just trying to understand and trade it. है ना fascinating? So चलते हैं आगे. So it's going to be clear here. So यहाँ पर हम अभी फिलहाल निफ्टी पे एक लूनार साइकिल अप्लाई करेंगे। मीनवाइल प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, हियर इज द लिंक फॉर देम। आई एम गोइंग टू ओपन अप टाइम नाउ। हमने कैंडलस्टिक समझा, इंट्राडे ट्रेड देखा, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे डिराइव करना है देखा, कैंडल के बार टेक्निक पे देखा। नाउ हियर इज द लिंक, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर जाना है, इंडिकेटर्स पे मून फेज है, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कैसे डालना है। मून phases, ठीक है, you have to click on that moon phases. Once you click on that moon phases, you will see this chart being plotted. इसको zoom in करते हैं। See, I am not an astrologer. I have no clue how astrology works. I have no understanding how planetary motions happen. कुछ भी नहीं पता है भाई। I am simply a trader. ठीक है, and जो चीज मुझे ट्रेडिंग में हेल्प करती है वो चीज मैं करता हूँ। So over here, if I am looking at this specific chart now on a lunar cycle basis, you can see that, can I say this is nothing but a full moon. ये जो नीचे देख रहे हो आप full moon है, and this is a new moon. New moon और no moon एक ही बात होती है। So this is a full moon. Full moon means Purnima, new moon means Amavasya. Is it clear, everyone? Look at this chart from this point onwards.
इसके पहले क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट से देखो, ठीक है, क्लियरली देखो, ध्यान से। यहां पर अगर आप देखोगे, कहना इससे, ये पूर्णिमा पे मार्केट ने टॉप बनाया एंड नीचे, पूर्णिमा पे टॉप बनाया एंड नीचे, पूर्णिमा पे यहां टॉप बनाया, नीचे, यहां पर प्रिसाइज ब्रिलियंट टॉप बनाया, नीचे, यहां पर टॉप बनाया। सोचो, ये टॉप बना रशिया यूक्रेन के पहले, यहां पर जो रशिया यूक्रेन वॉर था, और जो मैंने बताया ना 16,200 से 16,800 का रैली हुआ, देखो, वहीं से नीचे। तो यहां पर पूर्णिमा पे टॉप बना है नीचे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये जो पूर्णिमा का टॉप था, क्या लेवल था, ये हाई जो बना था, ये हाई बना था 16,000, नहीं एक सेकंड, ये हाई बना था 17,350 पे, 17,350 के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, 17,350 के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं किया है मार्केट ने एक भी बार, विच मीन्स दैट, क्या हम अज्यूम कर सकते फिलहाल, अगर 17,000 ब्रेक हुआ, basis of time I am talking, purely on the basis of time, can I say that if 17,000 breaks on the downside, market has topped out? Okay, Inderjit is saying Putin is bombarding on lunar. Thanks for that. Okay, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 17,000 यहां से शुरू किया था हमने, यहां टॉप बना, यहां टॉप बना, 1 2 3 4 5 टाइम्स टॉप बना है। इफ एंड ओनली इफ 17,000 ब्रेक्स, कैन आई से फिर से टॉप बना। तो अभी हम कर क्या रहे, वी आर नाउ कंबाइनिंग प्राइस एंड टाइम बोथ फॉर ट्रेडिंग। ओके, दिस इज नॉट गैन, दिस इज प्योरली लूनार टाइम साइकिल, दिस इज वैलिड फॉर स्टॉक्स, आप जाके चेक करो, हम और भी टाइम साइकिल पे चर्चा करेंगे, ये लूनार के बेसिस पे। अभी इसके पहले क्या हो रहा था वो देखते हैं, लिसन दिस वेरी केयरफुली। प्रायर टू दैट, whenever there was a Purnima, market rallied, Purnima market rallied, Purnima market rallied, this happened innumerous times in this entire up move, आप पास्ट में जाके देख सकते हो, पूर्णिमा मार्केट रैलीड every time. Now, can I say that? Can I say that very clearly that if 17,350 के ऊपर मार्केट क्लोज किया, if 17,350 के ऊपर मार्केट closes, can I say that the trend which reversed from top to down is again reversing on the upside? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, see, moon has a very powerful impact. If you look at an ocean wave, don't you know that full moon and new moon creates high tide and low tide? Are you with me? Okay, so full moon and new moon creates high tide and low tide. Human system is 75% water. Don't you think that will change our emotions and our thought process in a way, the full moon and the new moon? सिंपल है यार, सिंपल लॉजिक है, जो पूरे पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है यार, ग्रेविटी पुल बाय द मून साइकिल pulling up the entire ocean upside. We are 75% water. Don't you think it will result into fluctuation in us also? So that is reflected in stock market also, because ultimately we are only driving it. You, me, every single person, not FI, DII. We are the driving force. Okay, we are the driving force. So that's why it is important to understand this very clearly. So यहाँ पर से, can I say the cycle was full moon पे up move,
and at 18,400 I came out very strong and said this time on a full moon we are seeing a downward trend, which means शायद 18,600 पे टॉप हो गया. Basis of this we explained that, which is working fabulous until now. So can I say that if full moon पे rally हो रहा था during a major uptrend, full moon पे fall हो रहा था during a major downtrend, if we now break 17,350, we are in for a much higher move on the upside, because now full moon पे फिर से market में rally शुरू हो रहा है. So you don't really have to wait for Dow theory to form higher high, higher low. You will get the confirmation right here, basis on the moon cycle. Right here, I am telling you. सारी दुनिया जब 18,000 पहुंचेगा तब बोलेंगे मार्केट ऊपर की ओर है. I am telling you now, basis of the lunar cycle. If 17,350 के ऊपर 400 थोड़ा सा लीवे देते, 17,420 ये जो हाई है 420 440 के आसपास का, अगर उसके ऊपर बंद होगा, then I can say that the lunar cycle has changed from forming a top to forming a bottom again, and that's why market will now go up. If this level breaks, तो 17,440 का लेवल आपको अपने कैलेंडर में डाल देना है, और नीचे में 17,000 अगर ब्रेक हुआ, 17,000 ब्रेक्स, 350 क्यों? क्योंकि ये हाई के ऊपर एक भी बार क्लोज नहीं हुआ, एंड दिस वाज द हाई मेड ऑन द लूनार डे. दैट्स व्हाई if 17,000 breaks, then it will be a chaotic sell off again, like the past that we saw here every time. And news होगा रशिया यूक्रेन. So न्यूज तो बाद में आ जाएगा, हम तो पहले से बेसिस ऑफ दिस ट्रेड कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो मून साइकिल बहुत इजी है प्लॉट करना. आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, यहाँ पर मून लिखना है और क्लिक करना है डेली टाइम फ्रेम पे. यू विल गेट योर मून साइकिल क्लियरली. डू यू वांट टू नो व्हेन इज द नेक्स्ट रिवर्सल ऑफ मून? डू यू वांट टू नो द डेट? आज तक मैंने पंचांग देखा नहीं था, बट नाउ आई एम रेफरिंग टू जस्ट सी द मून साइकिल. You know, the next new moon or no moon or Amavasya is happening on 1st of April. 1st of April, which is happening on, and Amavasya is going to happen on 1st of April, which is 1 PM. 1 PM इसलिए क्योंकि ये कैलेंडर के हिसाब से होता है, भले ही आपको चांद नहीं दिखेगा लेकिन कैलेंडर में पता चल जाता है. So 1st of April is the date of Amavasya. So if market has to do something, it has to do it now from Monday or Tuesday onward. So ट्रेंड का ब्रेकआउट ये 2 दिन में आएगा. समझ में आया? इंद्रजीत सिंह, पूरे मून पे कब्जा कर लिया आपने फ्यूचर का. थैंक्स पुटिन जी. चलिए, इंटरेस्टिंग है कि नहीं बॉस? आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं बोल रहा हूं इसलिए आप बाय करो और सेल करो. आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आई एम सीइंग इट ऑन द चार्ट. That is what I am trying to do. So this is the science, as I said. And ye science, you know, WD Gann, he traveled to Himalayas to come out with his study of Gann, which is pure science. अगर वो वहां पर जाके फाइंड आउट कर सकता है, हम तो यहाँ से मून को देख के यहीं से कर सकते हैं. So सोचने वाली बात ये है कि अगर इतना पावरफुल ये वर्क कर रहा है, तो आज तक क्यों किसी ने इसके ऊपर रिसर्च करके बताया नहीं था? बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस नाउ, दिस वर्क्स. डू नॉट इग्नोर द पावर ऑफ कॉमन मैन. वी कैन डू इट. यू डोंट हैव टू बी इन द फंड हाउस और अ हेज फंड टू डू इट. आई एम, माय एम, माय मिशन इज टू ब्रिंग दिस टेक्निक्स टू ईच वन ऑफ यू एंड टेल यू दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड एंड मेक मनी, बट विथ अ स्टॉप लॉस. ओके, सो इसीलिए मैं बता रहा हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बैंक निफ्टी के ऊपर एक साइकिल को देखते हैं. शॉर्ट टर्म साइकिल है यहां पर, 89 पीरियड का टाइम साइकिल. आई एम नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू समथिंग फैबुलस. एंड सी ये सब चीज क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली वी वांट टू ट्रेड एंड मेक मनी. अगर किसी ने आपको बोला होगा आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं, टाइम पास करने नहीं,
We want to make money and we like playing that game of probability, right? So this is possible, and it is possible to make a lot of money from markets. That is possible, but with a systematic understanding. ओके, सो यहां पर अगर आप देखें क्लियरली, एक पीरियड है 89. दिस इज एन 89 पीरियड साइकिल ऑन अ 15 मिनट चार्ट. सिंस वी आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, हमें पता होना चाहिए 15 मिनट चार्ट पे कैसे ट्रेड करके पैसा कमाना है, एंड बड़ा कर सकते हैं. सी, आई ओन अ रिसोर्ट known as Cloud9 Hills Resort, which is in Lonavala. If any one of you are near around Mumbai, Pune, or want to travel, please do come to the resort. It's amazing, beautiful, and I was there for 8 months during lockdown, not worrying about the world. पूरा रिसोर्ट बंद था, लेकिन I survived and rather flourished because I knew markets, right? So that's what I did. So चलिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी पे 89 पीरियड का टाइम साइकिल कैसे फंक्शन कर रहा है. ठीक है, दिस 89 पीरियड साइकिल, 89 पीरियड, ये 15 मिनट चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, शॉर्ट टर्म 15 मिनट चार्ट. कैन आई से यहां लो बना, रैली, लो, रैली, एंड दिस इज बजट के पहले कहा. दैट्स अमेजिंग, राइट? एवरीवन वाज लुकिंग एट बजट एंड मार्केट ने पहले ही लो बनाया, अ लो एंड अ रैली, लो एंड अ रैली. यहां पर ट्रेड कैसे करना है, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. दिस इज बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट 15 मिनट्स 89 पीरियड. ट्रेड कैसे करना है, आपको खाली टाइम नहीं देखना है, आपको उसके साथ में स्विंग हाई या स्विंग लो भी देखना है. मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रेडिंग व्यू पे कैसे प्लॉट करना है, डोंट वरी. क्या करना है, अगेन रिपीटिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व स्विंग हाई एंड स्विंग लो ऑल्सो. ठीक है, so can I say, first of all, first just understand that, can I say this powerful low formed here in the rally, big time. यहां से सोचो ना, 3000 पॉइंट्स का रैली, 4000 पॉइंट्स रैली है, सॉरी, फ्रॉम हियर टू हियर, from here, amazing up move. Anurag is saying moon cycle has been working since last 1 year, we discussed in webinar. Fantastic Anurag, thanks for that. यहां पर लो बना, डायरेक्टली गैप के साथ रैली, यहां पर लो बन के माइनर रैली हुआ, मेजर नहीं हुआ, माइनर. नेक्स्ट लो कब बनना है देखना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. व्हेनेवर एवरी 89 पीरियड, ये 89 कैंडल्स है, उसके बाद में देयर इज अ लो एंड एन अप मूव, अ लो एंड एन अप मूव, अ लो एंड एन अप मूव, अ लो माइनर अप मूव विच गॉट स्टॉप्ड आउट अगर आपने बाय किया होगा. लेकिन हम बाय खाली टाइम पे नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, स्विंग हाई, प्रायर स्विंग हाई निकला, यहां बाय करेंगे, यहां पर प्रायर स्विंग हाई निकला, यहां बाय करेंगे, प्रायर स्विंग हाई निकला, यहां बाय करेंगे. प्रायर स्विंग हाई निकला क्या, नहीं, तो बाय तो था ही नहीं. आर यू विथ मी, समझ में आ रहा है? सो प्राइस के साथ में स्विंग हाई निकलना चाहिए. शैल वी गो ऑन द चार्ट एंड चेक टुगेदर, पैरेलली चेक करें कि कैसे ट्रेड करना है इसको. बहुत ही इजी है, देखिए ये सिंपल है, दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है. एंड इसके साथ में हम आगे की डेट भी डिफाइन करेंगे. सो जस्ट स्टे हियर. मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं, मून साइकिल अभी फिलहाल मैं हाइड कर रहा हूं आपके सामने, एंड यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट्स के चार्ट पे एक साइकिल का जोन. ठीक है, ये है टाइम साइकिल. ये 3 साइकिल क्या है, आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक ही साइकिल रखता हूं. मैं ये दूसरे 2 साइकिल को फिलहाल एक बार हाइड कर देता हूं. एक काम करते हैं, इसको हाइड करने के बदले मैं इसको टाइम फ्रेम कोऑर्डिनेट ही चेंज कर देता हूं, यहां से निकाल देते हैं विजिबिलिटी. दिस आई एम डूइंग सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ व्हाट वी आर डूइंग, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं. ठीक है, नाउ क्या करना है इस पे, ये जो आप देख रहे हो, ये साइकिल को कैसे प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना है मैं आपको बताता हूं. यहां पर आना है, लेफ्ट साइड में आपको ये क्लिक करोगे, यू विल सी साइक्लिक लाइंस. आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन, साइक्लिक लाइंस दिख रहा है यहाँ पे. साइक्लिक लाइंस पे क्लिक करेंगे. आफ्टर यू क्लिक ऑन दिस साइक्लिक लाइंस, you have to come and plot a point here.
समझो ये पॉइंट ले लिया मैंने, एंड यहां से आगे एक प्लॉट करना है हमें, ठीक है। ये प्लॉट करने के बाद में व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखेगा। ये डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू का कोऑर्डिनेट से रैंडम है, मतलब इसे -9 लिखा है। अगर -9 से मुझे टोटल 89 साइकिल पे जाना है तो क्या करना होगा बोलो? मेरे को इसमें 89 ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 80। फैंटास्टिक पुलापली, आनंद, लवली, मोहन 82 नहीं 80, तरुण ग्रेट। क्या किया? कैन आई से द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 89? डिफरेंस यार, सिंपल मैथ है। -8 में +89 जोड़ा तो 80 मिलेगा ना। तो ये बन गया आपका 89 पीरियड वाला टाइम साइकिल, ठीक है, जहां पर मार्केट के आसपास, उसके आसपास मार्केट में लो बनना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। मतलब यहां से अगर हमें बुलिश ब्रेकआउट मिला, वी विल बाय द मार्केट। वापस मैं रिपीट करता हूं कैसे। यहां जाना है, टाइम साइकिल, साइक्लिक लाइन सिलेक्ट करना है, यहाँ साइक्लिक लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे ही एक रैंडमली पॉइंट ले लिया, राइट में लेके गया। अभी ये पॉइंट का डबल क्लिक किया मैंने, तो पहला रीडिंग क्या है? -15। ड्रॉप कहीं भी रैंडमली कर दो, ड्रॉप रैंडमली कहीं भी कर दो। फिर क्या करना है, उस पर डबल क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट कैन आई से दिस इज -15। -15 में अगर मैं 89 जोड़ता हूं, आई गेट 74। ओके, एंड देन आई क्लिक ऑन ओके। तो ये बन गया मेरा 89 पीरियड साइकिल। 89 पीरियड साइकिल मतलब क्या हुआ? ये जो आप देख रहे हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 89 है। द डिफरेंस नंबर ऑफ कैंडल्स, इसके बीच में 89 कैंडल्स है। समझ में आया? 89 क्यू, उसके लिए टाइम चाहिए, बिकॉज दैट्स द साइंस ऑफ टाइम साइकिल। वो क्यू डिराइव किया, 55 क्यू है, कैसे डिराइव करना है उसके लिए टाइम चाहिए। सो आई नीड एटलीस्ट 12 आवर्स विथ यू सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि ये साइंस कैसे डिराइव करते हैं। ये 89 क्यू है, 55 क्यू है, कैसे आया वो है इसीलिए। सो व्हाई डू यू यूज 3 वर्टिकल लाइन? जोन बनाया है हमने, मैंने ये खाली बताने के लिए फिलहाल बनाया। आप एक लाइन यूज करिए फिलहाल। ये आई हैव शोन यू जस्ट फॉर शोकेसिंग हियर कि कैसे उसे प्लॉट करना है। FLD I'll not be able to discuss here. That is about ki FLD I am going to discuss in Master of Cycles, not here. So zone means support zone or time reversal zone ki ye zone se reverse ho sakta hai upside. So now once you have done that, how do you trade? Trade kaise lena? I have to buy on break above this level, मतलब 32,800 पे समझो मैंने बाय किया 4 लॉट बैंक निफ्टी का। 32,800 पे बाय किया 4 लॉट बैंक निफ्टी का। मेरा स्टॉप लॉस था 32,200, ये लो 32,200 का स्टॉप लॉस था। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला मुझे? 32,800 से 32,200 पे कैन आई से माय स्टॉप लॉस इज 600 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी। क्लियर है? व्हेन डू आई एग्जिट? आई विल एग्जिट वंस आई सी ऑन एन आवरली चार्ट या डेली चार्ट पे क्लोज बिलो द प्रायर कैंडल लो। 15 मिनट्स पे एंट्री ले लिया। एग्जिट के लिए मैंने आवरली कैंडल टेक्निक फॉलो कर लिया या डेली कैंडल टेक्निक, डिपेंड आपको कितना बड़ा ट्रेड लेना है। उस बेसिस पे मैंने यहां से राइड किया। आई विल एग्जिट राइट अंटिल दिस पॉइंट विच इज से अराउंड 35,000 लेवल। तो अगर समझो मैं 32,000 से -35,000 करता हूं तो नियरली अराउंड 2,200 पॉइंट्स मुझे मिला। 32,800 से if I am riding until 35,000 level, can I say 2,200 points मिला on 4 lots? On 4 lots, can I say how much will I make? इन कितने टाइम में? Can you beat that? पॉसिबल है कि नहीं है? सोचो।
स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। सी एवरीथिंग हैज अ रिस्क, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। तो मेरा स्टॉप लॉस था 600 पॉइंट्स का, मुझे मिला नियरली अराउंड 2200 पॉइंट्स। समझ में आया? मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया? 6:22, मतलब कितना हो गया मेरा रिस्क रिवॉर्ड? 1:3.5 के आसपास। टारगेट मैंने कैसे निकाला? टारगेट इज ऑन द बेसिस ऑफ आवरली कैंडल। अगर आवरली कैंडल क्लोज प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, आई विल एग्जिट दैट वे। सी दिस इज फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट चार्ट पे जाके टाइम साइकिल अप्लाई करना पड़ेगा, और 5 मिनट पे भी इट वर्क्स फैबुलस। नाउ डू यू वांट टू नो द टाइम व्हेन द मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स बैक ऑन द अपसाइड अगेन? जो टाइम पे आपको ध्यान रखना है, डू यू वांट टू नो दैट टाइम? दैट टाइम इज गोइंग टू बी ऑन 29th मार्च बाय 1:45 AM। नीचे दिख रहा है टाइम आपको? 29th मार्च को बाय 1:45 के आसपास से मार्केट वापस से पॉजिटिव ट्रेंड मिलेगा। इसका मतलब आज 26 है, 29th होगा ट्यूसडे। कैन आई से ट्यूसडे को 1:45 PM is where you should start looking for buying opportunity on the market? Are you with me? Tuesday you have to look at the clear 1:45. So Tuesday ko can I say that Tuesday second half will be for buy? Are you with me? Tuesday second half of the market, which is 29th of March, will be a buying opportunity for us. है ना इंटरेस्टिंग साइंस? तो मतलब अभी क्या करना है, अभी कैसे ट्रेड करना है? ओके, नाउ सपोज द लो ऑफ फ्राइडे इज ब्रोकन। सपोज बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। द लो ऑफ फ्राइडे इज ब्रोकन, कैन आई से टाइम सेल में है? टाइम कभी तक सेल में रहेगा? टाइम सेल में रहेगा ट्यूसडे। ये टाइम नोट करके रखिए, 1:45 PM से मार्केट रिवर्स होना चाहिए, ट्यूसडे 1:45 PM। तो कहां सेल करना है? अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है, आवरली कैंडल क्लोज होता है, वी विल गेट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर? नाउ आप सोच रहे अगर यहीं से ऊपर गया तो वेट फॉर व्हाट? अगर यहां से ऊपर गया, यू वेट फॉर मार्केट्स टू कम टू दिस टाइम फ्रेम। वंस दिस कम्स, यू बाय। है ना फैंटास्टिक? मतलब आपको पता है मंगलवार को 1:45 के आसपास मार्केट में कुछ तो होने वाला है चेंज। ये टाइम याद रखो, नहीं हुआ तो देखेंगे ना, फिलहाल तो याद रखो। इज इट क्लियर? I want everyone to understand this science very clearly. You can do this even on a 5-minute chart. Shall we go on a 5-minute chart? Okay. मोहन बोल रहे आप तो तीसरी आंख खोलने की कोशिश कर रहे हो। Why you are confident? Why you are confident? क्योंकि ये चलता है इसके लिए। ठीक है, it works like magic. That's why I'm confident. So 5 minutes पे चलते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट है ये जो साइकिल आप देख रहे हो, ये 15 मिनट्स वाला साइकिल है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन द बाय साइड एंड नॉट बेरिश। नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि साइकिल लोस बनता है। हाँ, ओके, द क्वेश्चन इज दैट, लेट मी कम एंड एक्सप्लेन इट हियर, कि साइकिल फॉर्म्स लो ऑन अ ऑलवेज। ये जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज फॉर लोज मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट द टॉप्स। so it is for lows, so cycle is used to capture lows. So the distance between each of these candle is 89 period. चलिए मेरे पास और भी चार्ट है, वो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। लेकिन समझ में आया, इजंट दैट वंडरफुल? तो ऑप्शन ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है? अगर यहां से लो ब्रेक हो गया तो मे बी देन यू कैन सेल कॉल ऑप्शन अराउंड 36,000 37,000 वाला कॉल ऑप्शन। ये वाला हाई का कॉल ऑप्शन बेच दो, राइड करो ट्यूसडे तक। ट्यूसडे के बाद में अगर लो ब्रेक हो गया, ट्यूसडे के बाद में वेट करो, 1:45 के आसपास बुलिश कैंडल बना, ओके, यू विल
इंश्योर दैट ये बुलिश कैंडल बनने के बाद में आप बाय करो। सो प्राइस और टाइम दोनों के साथ कंफर्म होने पे ही बाय करना है। और साइकिल्स आर यूज्ड टू कैप्चर लोज नॉट टॉप। टॉप होता है, बहुत रेयर होता है। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ टॉप हो गया, स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ और लो निकल गया तो सेल करो। दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड बेसिस ऑफ द टाइम साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं एक और साइकिल दिखाऊंगा। अभी चलते हैं 15 मिनट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपने यूज किया, उसके बाद चलते हैं 85 वीक। ये लाइन को इग्नोर करो फिलहाल, ये एक्सपेरिमेंटल लाइन है, उसको इग्नोर करो। 85 वीक पे चलते हैं एंड यहां पर अगर आप देखोगे, यू कैन क्लियरली सी अ लो फॉर्म्ड हियर, अ लो फॉर्म्ड हियर, low formed here, low formed here, low formed here. Can you see on most of the occasions the low formed here? यहाँ टॉप बना था, ओके, a low formed here and यहाँ पर देखो मार्च 2020 जहां पर लो बनना था, लो वही बना। So this was the area when a low was supposed to form and Nifty formed a low fantastically exactly at that point of time. Pandemic. Was it because of pandemic or was it because of time? You think now. I think it was because of time. Pandemic तो होना था, हो गया, लेकिन मार्केट को रिवर्स होना था, वो वहीं से रिवर्स हुआ जहां से उसे होना था। Isn't that fantastic? And in fact ये लो बना भी exactly टाइम के साथ ट्रेंड पे, जो साइकिल ये ट्रेंड ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली वहीं पे लो बना जहां उसे बनना था। Isn't that wonderful and beautiful? चलिए 5 मिनट अप्लाई करना है हमें, तो वहां से वापस चलते हैं 5 मिनट की ओर। आई एम गोइंग टू प्लॉट अ साइकिल हियर। कैसे प्लॉट करना है? आई एम गोइंग टू टेक अ 5 मिनट साइकिल। यहां पर चलते हैं अराउंड 80 के आसपास का एक 5 मिनट साइकिल चलता है। सो आई एम गोइंग टू प्लॉट इट हियर। इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम 85 अप्लाई करते कोऑर्डिनेट। सो 40 से 85 ऐड करेंगे हम, तो कितना मिलेगा? 125। 125 हमने रखा। साइकिल का कलर चेंज कर लेते हैं, वाव, जिससे पता रहे कि ये दूसरा साइकिल है। वो बड़ा वाला साइकिल नहीं यूज कर रहे, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू सी द रेड लाइन? इसके आसपास लो होना चाहिए, एग्जैक्ट उधर ही बनेगा जरूरी नहीं है। 5 मिनट पे कैन आई से अ लो फॉर्म्ड हियर? कैन यू सी अ लो फॉर्म्ड हियर? कैन यू सी अ लो फॉर्म्ड हियर? एंड कैन यू सी अ लो फॉर्म्ड एग्जैक्टली on Friday when it was supposed to form by around 3 p.m. and a big rally? Can you see that happening? ये लो देखो ना, यहां से रैली देखो, ये 5 मिनट चार्ट है। यू वांट टू नो 5 मिनट्स पे कभी मार्केट में बैंक निफ्टी में लो बनेगा वापस? इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग 5 मिनट का नेक्स्ट लो इज गोइंग टू हैपन ऑन 29 मार्च मॉर्निंग 9:40 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ? 29 को कुछ तो मेजर है। यू रिमेंबर 29 को ही बड़ा साइकिल भी लो बना रहा है, 29 को भी ये वाला साइकिल भी लो बना रहा है। कैन यू सी दैट? सो कैन आई वेरी कॉन्फिडेंटली से कि बॉस 29 को ट्यूसडे को मैं बाइंग के नजरिए से बाजार में उतरूंगा आज, इंट्राडे हो कि पोजिशनल ट्रेड हो। क्लियर है? आर यू विथ मी? वहां पर बाय नहीं करना है आंख बंद करके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। वहां पर प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल देखना है। हमने क्यों किया कैंडल आज सुबह से? व्हाई डू यू थिंक हमने कैंडल किया? टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं यार, हमने कैंडल इसलिए किया सो दैट वी हैव अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। इफ द कैंडल इज बुलिश एंड टेक्स आउट द स्विंग हाई, डोंट यू थिंक यू नाउ हैव ऑल द मोर रीजन टू बाय? नाउ ट्यूसडे न्यूज कुछ भी आ जाए, मार्केट बाय में है, लेकिन कैंडल भी चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप, कम्स डाउन, स्विंग हाई नहीं निकाला, स्विंग हाई नहीं निकाला एंड ये लो निकाल दिया सुबह। सो कैन आई नॉट सेल इट? यहां सेल नहीं कर सकता हूं मैं? सेल करके अंटिल व्हेन 145 अगेन, 145 को अगेन ऊपर आया एंड लो स्विंग हाई निकाल दिया, कैन आई अगेन सेल इट? वाओ, फैंटास्टिक। कैन यू सी दैट? तो खाली बाय करने के लिए नहीं है, सेल भी कर सकते, लेकिन
अगर ये टाइम पे इसने स्विंग हाई निकाल दिया, कैन वी बाय इट नाउ? कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? See, this is the research, this is ज्ञान which if you apply, we know how it works. So बैंक निफ्टी का ऑस्पिशियस टाइम हमने सिलेक्ट कर लिया। हमें पता है हम कोई भी नया घर लेते तो मुहूर्त निकालते, हम फाइंड आउट करते कि कौन सा शुभ मुहूर्त है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? जो चीज हम वहां पर कर रहे वही चीज हम यहाँ पर दूसरे वे में कर रहे। क्या कर रहे? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बैंक निफ्टी ऑस्पिशियस टाइम इज ट्यूसडे मॉर्निंग, एक टाइम मिला हमें, एंड आफ्टरनून में 1:45 मिला। सो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, ये दो टाइम पे बैंक निफ्टी के लिए 29 मार्च को ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर द ऑस्पिशियस टाइम ऑफ बैंक निफ्टी। सो आई जस्ट नोट इट हियर, बैंक निफ्टी ऑस्पिशियस टाइम, बैंक निफ्टी का शुभ मुहूर्त कभी है, विच इज 29th ऑफ मार्च। एंड देखेंगे वो टाइम पे 9:45 AM था, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी इफ आई एम जस्ट, एंड नेक्स्ट इज 9:45 PM, करेक्ट? ये दो टाइम निकाला ना हमने, 9:40 एंड 1:45, ठीक है? 9:40 एंड 1:45, this is the auspicious time, and we want to see if bank nifty prices can confirm with this auspicious time. This is what we do, right? We find out auspicious time, शुभ मुहूर्त कहाँ है, एंड हम उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। यार आज तक हम शुभ मुहूर्त हर चीज बिजनेस में देखते थे, so why not to identify a शुभ मुहूर्त for stock market also, where it is so important. Okay, it is so important. चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी नॉट स्पेंड मच टाइम हियर, एंड पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, ensure you click on that subscribe button of my YouTube channel, क्योंकि आपको इस तरीके का ज्ञान और वीडियो कहीं और नहीं मिलेगा। So ensure you are following me on YouTube, Twitter and Telegram. आगे देखते हैं, निफ्टी का भी है। आईटीसी 55 days, every 55 days ITC rallies big time. Can you see that? It's amazing. Okay. Now I see how amazed one will be after joining the mentorship. Exactly, Mohan. It is simply thrilling. This is how it is. So गोल्ड 55 डेज, सारी दुनिया बात कर रही थी गोल्ड रैली हो रहा है रशिया यूक्रेन के लिए। मैं बता रहा हूँ गोल्ड रैली हो रहा है क्योंकि उसका शुभ मुहूर्त आ चुका था जहां से उसे रैली करना था, और उसने रैली किया। आई विल गो टू क्रूड ऑयल नाउ। क्रूड ऑयल, गोल्ड है, साथ में बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन पे भी देखो चलता है, बट कॉपर पे साइकिल लो बन रहा है, विच मीन्स कॉपर पे अच्छा ट्रेंड मिलेगा आपको ऊपर की ओर। नाउ वी विल गो टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे अगर आप देखोगे यहां पर एवरी 115 डेज क्रूड में बाइंग आती है। यहां पर बाइंग देखो, यहां नेगेटिव हो गया था क्रूड, नेगेटिव $40 हो गया था, वहीं से बाइंग आई, ठीक है? यहां से बाइंग बाइंग बाइंग, ये यहां था जो जनवरी में था। मैंने कहा था फेब मिड से क्रूड में बाइंग आनी चाहिए, हुआ क्या? लेट्स जस्ट सी दैट, लेट्स जस्ट सी दैट। वाओ, look at this. This was supposed to happen. This was supposed to happen here, and look at the buying in crude. Fantastic. Which means जुलाई में, अब ये साइकिल डिराइव कैसे किया? That's the science ना यार, उसके लिए तो टाइम चाहिए। That's why the mentorship program which is starting, so next Wednesday से हमारा mentorship का प्री सेशन स्टार्ट हो रहा है। You have to be a part of this mentorship program, जहां हम ये पूरे साइंस को 3 महीने में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लाइव ट्रेड लेंगे बेसिस ऑफ टाइम। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू दैट बेसिस ऑफ टाइम। ओके, 15 मिनट इज मोर इंपॉर्टेंट, 5 मिनट से ज्यादा 15 मिनट साइकिल इज मोर इंपॉर्टेंट, तो 15 पे ज्यादा हम ध्यान देंगे। सो क्रूड पे देखो मैजिक, देखो सारी दुनिया रशिया यूक्रेन के कारण बोल रही थी, और मैं बोल रहा था समय क्रूड के लिए ऊपर का ही है, और वहीं से टर्न हुआ। You know, even RBI should follow this cycle on currency and other places so that they know inflation का क्या होगा। वोल्टास पे 79 डे साइकिल एग्जैक्टली वैसा ही टर्न हुआ। दीपक फर्टिलाइजर, दिस इज गैन एंड निफ्टी कंबाइंड टुगेदर। यू नो गैन के लेवल्स, ये पुराना चार्ट है फैब का, लेकिन सोचो कौन से लेवल्स है। निफ्टी कहां पर बार बार रुक रहा है? कैन यू सी दिस? 17,227,
एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे बार बार निफ्टी क्यों रुक रहा है, बिकॉज दैट इज अ कैन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल। फिलहाल मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समय का अभाव है, बट आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू हाउ ब्यूटिफुली everything works. You know, the low found by Nifty is where around 15,600 GAN level. Can you see that? 16,200 का जो मेरा टारगेट आया था वो मैंने बताया था GAN लेवल। वाव। सो मेंटरशिप के लिए मिनिमम कॉर्पस कुछ नहीं, आपको लर्निंग के लिए एक पैशन होना चाहिए और ट्रेड करके पैसा कमाने के लिए एक वो होना चाहिए, जुनून जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो लूनार साइकिल के बारे में जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, सो आई नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस, ऑलरेडी बात हो गई। सेंसेक्स का 61,000 हमने प्रेडिक्ट किया था 2013 में। वी विल प्रेडिक्ट इट टुगेदर इन मेंटरशिप प्रोग्राम की 2027 तक सेंसेक्स का क्या लेवल होगा। व्हेन विल सेंसेक्स टच द लेवल ऑफ 1 लाख, वो हम प्रेडिक्ट करेंगे साथ में। ओके, वी आर गोइंग टू डू दैट। दिस इज बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। वी आर प्रेडिक्टेड 40K जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लूनार साइकिल ऑलरेडी डिस्कस किया है। वेरियस चार्ट्स देखिए इस पे कि यहां से एक लेग नीचे आएगा, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आना चाहिए। निफ्टी का चार्ट है, ऐसा हुआ क्या? लुक एट दैट, फैंटास्टिक। मतलब प्रिसाइजली वहीं से जहां से टाइम के साथ रिवर्स होना था वो रिवर्स हुआ, नीचे आया, रिवर्स हुआ। एग्जैक्टली 2015 का है, 2015 का है ये। सोचो कितने साल से मैं ये चीज को अप्लाई कर रहा हूं एंड इट इज वर्किंग लाइक मैजिक। इज दिस नॉट अमेजिंग? इज इट नॉट अमेजिंग? सो 17,756 इज द नेक्स्ट गेन लेवल। ओके, सो ये ब्रह्मास्त्र है, राइट? सीपीआर ट्रेडर इज सेइंग आई बिकेम योर बिगेस्ट फैन। बैंक निफ्टी का ब्रह्मास्त्र दे दिया है। दिस इज ब्रह्मास्त्र। समय बलवान है। Only you and you alone can change your situation. Don't blame it on anything or anyone else. Classic saying. So if you want to, these are various people from a mentorship program. Firdaus is doing fabulous. Vaibhav Khanna. These are various snapshots. They are how they are trading. Even for a newbie, how they are. I'm a newbie. Started in 2000. Lost my job in Singapore. And look at this guy. This guy has made it big. You know, he has made 16.5 lakh intraday with option from 10 lakh profit एक दिन का ये। He made post mentorship, he made 46 lakh is what he said, and he lost his job in Singapore. So this is how it works. Fantastically it works. So this is about mentorship program. These are all my time traders. भाव भगवान छे, समय बलवान छे मोहन। So that's how it works. So this is what Vivek has to say. This is what various Suresh has traded. Bhavya is trading 100% return. So look at this guy. He's saying 100% return in a day. I never post my PNL, but this time I have to share. Given credit to the mentor. I took put yesterday. So ये सब proper private Telegram group हम form करते हैं discussions के लिए for mentees, जहाँ पे ये ongoing discussions होता है, जहां पर हम ट्रेड साथ में देखते हैं, डिराइव करते हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर व्हाट वी डू। सो you are able to capture the nerve of the market. Rimple, thank you very much for sharing that across, right? Really lucky to have you as a mentor. So this is how we do it. Firdaus is doing very well. You keep seeing the tweet. Yes, exactly. So this is what Yogesh has been doing. As I said, Yogesh is doing fabulously well. Okay, and that's what I thought कि यार शेयर करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होता क्या है मेंटरशिप में, हम करते क्या है। So this mentorship is starting now. Wednesday को प्री सेशन है and the class starts on 2nd of April, Saturday. We meet 3 Saturdays in a month for 3 months. उसके बाद भी we are going to continue meeting, prioritizing, and every periodically we are going to be there. Complete hand holding. तो ऐसा नहीं सोचते 3 महीना हो गया तो बंद कर देंगे, हम आपको छोड़ देंगे, नहीं. It's going to continue. You are going to learn. We are live trading, algorithmic trading, all of those things. So बहुत सारी चीजें हम करने वाले in mentorship. So you have to understand this mentorship, as I said, is starting from the March Wednesday, which is 29th को हमारा साइकिल है, 30th से हम शुरू कर रहे प्री सेशन. साथ में you will be getting
complete access to all of these programs. Okay, the charges for mentorship is 1,20,000 plus GST, लेकिन इसके साथ में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम मिलेगा OTTA प्लस, जिसमें हम ऑप्शन के बारे में फोकस करेंगे, विच इज गोइंग टू बी लाइव सेशन. Plus you will get access today to Master of Cycles. We are giving access to Master of Cycles now only to participants of mentorship, otherwise नहीं दे रहे. टाइम को कैसे प्रेडिक्ट करना है. Plus live session on Master of Waves. Plus I am going to give you 20 bonus videos if you are registering today. And this is an early bird offer. हमारा अभी का प्राइस आप वेबसाइट पे देखोगे, it is 2,80,000. This is only for today. 20 bonus videos we are going to give you. Plus I am going to give you 15 days access to the research that we are publishing. You know, अगर आप ये बोनस वीडियोस, OTTA, MOC, MOW का प्राइसिंग क्लब करोगे ना, it's going to be much more than 1,20,000. In fact, I am giving you access today to MOTA also. So MOC और MOTA का वीडियो एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग, और बाकी सब सेशंस हमारे लाइव सेशंस होंगे. लाइव ये एक्सेस खाली आज ही मिलेगा अगर आपने आज रजिस्टर किया. इफ यू रजिस्टरिंग टुमारो, प्लीज डोंट कम टू अस, बिकॉज कल से वी आर नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर दिस मेंटरशिप एंड बोनस तो भूल ही जाना. सो ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम क्या है? दिस इज हैपनिंग ऑन 23rd and 24th of April को हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम है 2 days का, विच इज गोइंग टू बी फोकस ऑन पे ऑफ चार्ट्स. ओपन इंटरेस्ट को कैसे लेके एनालाइज करना है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस. Along with that, we are going to look at we are completely going to focus on volume profile. All of those things we are going to do if you are a part of option trading using technical analysis. This is 19,500 plus GST. Again, if you are doing it today, you will get access to 5 bonus videos also. So अगर खाली आपको ऑप्शंस ही सीखना है, तो मेंटरशिप में ये तो है ही, मास्टर ऑफ वेव्स भी है. मास्टर ऑफ वेव्स इज ऑल अबाउट एलियट वेव, नियो वेव, फैंटास्टिक फोरकास्टिंग, जो मैंने 2013 में प्रेडिक्ट किया था यूज करके, वो यूज करेंगे. साथ में टाइम साइकिल का कंसेप्ट भी इसमें डिस्कस होगा, प्लस इचिमोको क्लाउड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So all of those will be a part of fantastic study. These are 2 days of live program which is happening in May. Okay, and BMW is club along with all of those things. Now you need to choose which path to financial freedom. कौन सा path आप choose करना चाहते हो? Because this science I am giving away. You will not find anyone else giving something like this at such pricing. I am telling you, this is an investment for lifetime. इट्स ए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीखा भूल गए. इट्स नॉट अ मूवी टिकट. इट्स नॉट यू आर स्पेंडिंग एंड यू फॉरगेट फॉर एंटरटेनमेंट. दिस इज अ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, इट इज गोइंग टू चेंज यू. अगर कुछ नहीं करना है, आप सोच रहे हो, देन मे बी यू आर जस्ट नॉट एबल टू पुश योर सेल्फ. या मार्केट में लॉस करके ट्रेड क्यों करना है? यूज दिस साइंस एंड देन ट्रेड. सो हियर इज द लिंक. You can simply go on this link and register yourself. The link is shared across by my colleague also. Simply complete handholding means that आपने क्या ट्रेड लिया, आपने क्यों वो ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है. I am not saying you to learn something new. I am telling you to use your own strategy and we will refine it together. होता है ना कि यार पता है ट्रेड करके पैसा कमाना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, एंजाइटी है. मार्केट जैसे ही चालू होता है, अरे यार क्या करूं, ये करूं, वो करूं. दैट एंजाइटी वी विल ब्रिंग इट डाउन टू एज लो एज पॉसिबल. नो एंजाइटी एज ट्रेडिंग. वी विल हैव अ कंप्लीट क्लियर गोल, अ प्लान, एल्गोस फॉर स्टॉक सिलेक्शन. मैंने सीएनबीसी पे कौन से स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किए थे, कैसे जीता, वी आर गोइंग टू डू दैट. सो दिस इज अ पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, आई से, बिकॉज इफ यू वांट टू जनरेट दैट passive source of income, if you want to change the way you are living, this is for you. You don't really have to live like survival यार, कि आज ये बिल पे करना है, आज वो करना है. I have lost my job in 2008 and मैंने किया है change. As I said, CNBC पे I was negative, but I changed because this works in the market and I have shown you how it works. So as I said, you will get access to 20 bonus videos. Plus
immediate access you will get to master of cycles. तो ये वीकेंड पे आप वो देख सकते हो. Start trading from Monday using this master of cycles. कैसे मैंने वो 50 जो 89 पीरियड डिराइव किया, कैसे किया, क्यों किया, all of those things are clubbed in this scientific capsule of master of cycles program. Plus you get access to master of waves, plus you get access to option trading, and we will have a private telegram group which will be discussing for lifetime, plus lifetime access to AK Trading Gurukul. इसका मतलब है इस पे हम आगे भी जो पीरियोडिकल रिवीजन सेशंस है उसमें आपको एक्सेस होगा. Even if you are missing any of the session, the recordings will be given to you for a limited time, जो आप go through कर सकते हो. You can speak with me, get in touch with me, we will discuss out everything. So that is, and it can be applied across. So does not matter whether you're a housewife, a student. Yeah, I am speaking at IIMs also, I'm speaking at NISM, I've authored a book. कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार. आई एम एन इंजीनियर. अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो. जरूरी नहीं है आपको पास आउट होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट्स में आईक्यू नहीं, ईक्यू चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट. सो अगर आप बीएमडब्ल्यू के लिए रजिस्टर कर रहे, विच इज ऑप्शन प्लस मास्टर ऑफ वेव्स प्रोग्राम, दैट इज फॉर 32K प्लस जीएसटी, you can simply register today. We will give you access to 10 bonus videos if you are doing it today, plus access to MOTA ka recording, plus you will be part of OTTA, and also you will be a part of Master of Waves live sessions. So this is bonus videos are only and only for today. So register करना कैसे? ये जो लिंक दिया है वहां जाना है, वहां पर आप क्लिक करोगे, you will be directed to this page. You can simply go and register yourself. You can pay using credit card, net banking, anything. The pricing offer stands valid only for today with the bonuses itself, which is worth more than 120. Each training is worth a lot more, is what I wanted to say. You can do that. And I'm taking a very quick poll now. Which path you want to choose to become financially free? कौन सा path आप choose करना चाहोगे जो आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर, अगर आप 15 मिनट है, सी आपको 15 मिनट है दिन में ट्रेड करने के लिए, चलेगा. वी विल डू दैट ऑल्सो. सो यू डोंट रियली हैव टू क्विट इफ यू डोंट वांट टू, एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग क्लियरली. प्री सेशन ऑफ मेंटरशिप इज गोइंग टू हैपन ऑन वेडनेसडे, विच इज शेड्यूल्ड एट 4 PM. ये एक सेशन हमारा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है. सो योर लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम टूडे इटसेल्फ, एंड वेडनेसडे से हमारा सेशंस एनीवेज शुरू हो रहा है. So that's how it's going to be. I'm going to take a few points, that questions that you might have here. Okay, I want to learn intraday option trading. So how do I go about it? See, this mentorship will focus on anything that you might want to make money with. Intraday options को कैसे ट्रेड करना है, हम टाइम को अप्लाई करेंगे, टाइम के साथ में कैंडलस्टिक को कैसे क्लब करना है, एल्गोस कैसे बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. We will be doing that very very clearly. Okay, so don't worry on that, Indrajit. हम साथ में करेंगे. So you have to take that step forward if you want to achieve that financial freedom. And possible है यार, मैंने किया है. As I said, for 8 months I was at my resort which I own in Lonavala when lockdown, but I was able to be there and flourish. Why? क्योंकि I know markets, and that's the reason. This will happen in English and Hindi both mix. Yes, that is correct. So English और हिंदी दोनों में होगा, ये दोनों है. So club होगा, so don't worry on that. What is the difference between OTTA and MOW? See, OTTA में हम कैंडलस्टिक यूज करेंगे, मूविंग एवरेज यूज करेंगे, साथ ही में वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बिहाइंड द सीन्स हो रहा है वो करेंगे. एंड मास्टर ऑफ वेव्स इज अबाउट एलियट वेव. यू नो, इट्स ब्यूटीफुल. अगर आप मेंटी है तो कंप्लीट एवरीथिंग विल बी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो फॉर मेंटी इट इज अमेजिंग, बिकॉज मेरे साथ अगर आप सोचो, अगर 2 घंटे में आपने कुछ सीखा है, you will be with me for lifetime. How much of learning will that happen with you? Imagine. Nilesh Pawar is here. Nilesh, I remember you saying that mentorship khatam hone ke baad mein you went again on a Saturday, just opened up your machine because you felt so overwhelmed and strong about that mentorship program. You were amazed.
वी विल बी लुकिंग एट यूएस मार्केट्स इन मेंटरशिप, यस, क्योंकि अल्टीमेटली सब मार्केट्स पे ये टेक्निक काम करता है. सो ट्रेडिंग गुरुकुल है. गुरुकुल का मतलब है मैं नहीं सिखाऊंगा, आप सब सीखेंगे एक दूसरे से. मैं आई एम जस्ट गोइंग टू एक्ट एज अ, यू नो, जो बोलते हैं सूत्रधार, शायद, इफ माई इंग्लिश इज करेक्ट, हिंदी इज करेक्ट, ठीक है. आई एम जस्ट अ गाइडिंग, आई एम अ टॉर्च बेरर. आई विल गाइड यू कैसे करना है, लेकिन डिसिप्लिन कैसे बनना है. मार्केट में होता है आपके साथ स्टॉप लॉस आया निकले नहीं, डिसिप्लिन कैसे बनना है वो सीखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. So Sumangal is going to attend mentorship from abroad. He is getting on board. Fantastic. So over here Sunil is saying कि ये क्यों करना है, because it's value. कोई भी चीज अगर आपको फ्री में मिलेगी ना सुनील, उसकी वैल्यू नहीं होती है. You have to understand value. And when you are at a level when you want to uh, share across your research with people at large, अगर आप जैसी सोच रखेंगे तो कोई भी आज तक शेयर नहीं किया है, आपको पता है, बिकॉज पीपल डोंट शेयर देम. एंड आई वांट टू शेयर, दैट्स माय एम, क्योंकि मुझे पता है विदाउट मेंटर लाइफ वाज सच अ चैलेंज. एक मेंटी के कारण आप जो लर्निंग आपकी 5 साल में हो सकती थी, वो लर्निंग डायरेक्टली 3-6 महीने में हो सकती है बिकॉज ऑफ अ मेंटी. यू नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Pulapalli is a mentee. He is here. He's saying you are a Drona sir. We are Eklavya's and Arjun. Thank you. अगर आपने देखा था तो गुरु दक्षिणा तो द्रोणाचार्य ने भी लिया था. So for this is very deep for people who understand spirituality and those things might understand that. For others who are freebies might just be looking out for freely learning from Google and here that, but then ultimately losing money. Don't do that. Just take that systematic step. Whatever you do in life, do it systematically and very very डिसिप्लिन्ड अप्रोच, और एक मेंटी के साथ, मेंटर के साथ करो जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए. डू दैट. ओके. बीएमडब्ल्यू का मेंटरशिप ज्वाइन करना है, श्योर मदर सर, यू कैन सिंपली गो एंड रजिस्टर. द लिंक इज शेयर्ड अक्रॉस विथ यू. फैंटास्टिक. वेलकम ऑन बोर्ड. I can clearly see Shamim has joined the program. Thank you, Shamim. Fantastic getting you on board for the mentorship. I'll tell my team to give you access to the Master of Cycles right today itself. Wednesday के पहले आप वो go through कर लेना, and हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे के बाद मार्केट की जो चाल है वो क्या है और कैसे पूरे मेंटरशिप को हमें देखना है. So we are going to do that. Fantastic, Shamim, and great to know that. I can see Rohan is saying, okay sir, I'm a student from the college, can I also board for this? Yes, of course, don't worry, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीजें जो हम करने वाले जैसे आज किया, it's going to be from that way. So fantastic to get you also, Rohan, on board. Great to see you here, and this is valid only and only for today. Okay, I'm making it very very clear, and for people who are giving your time today here. So what do I get of this mentorship is all that is mentioned here, the bonus videos. In fact मेरी टीम को तो मैंने बोला भी नहीं था कि 15 days रिसर्च भी दे रहे, वो भी दे रहे, and MOT access भी देंगे हम. So all of those things. So we will set up the entire structure for you. You don't really have to worry about anything. ठीक है? Just take that step forward. This is what people have to say. Vinit Oswal, fantastic 3 months of mentorship. Rahul Chaudhary, Omkar was brilliant. What they have to say about this program. And you can clearly see Shilpa Patankar, amazing learning experience, your passion for teaching. That's what it is. Keep pushing us to form the view, not giving the answers directly. Rakesh Singh, humble person. Nilesh Pawar was ultimate. You are so should attend these very program. Financial world, you are the next Modi, he said. Okay, very very clearly is what is mentioned here. Clearly a disclaimer. We are SEBI registered. The registration numbers are mentioned here. Please look at that. And these are disclosure. Please understand this. And 9920422202 is the number for your financial freedom. So save this number. And you want to become, I want you to become rich and deal with your problems. You know, that's the solution. These are the various coordinates. Become a wonderful trader.
And these are the various coordinates. Ensure you are following us on Twitter, Facebook, Instagram, and Telegram also. So be a part of this wonderful journey. And thank you everyone for joining me here. I'm ending the poll very quickly now. This was simply fantastic. So many questions from so many participants, thousands of participants, but I can't take all the questions क्योंकि time नहीं है. लेकिन mentorship में हर एक question, हर एक चीज साथ में बैठकर डिस्कस की जाएगी. This is what I'm going to do from here on. So Rajendra is saying my account is positive from last 2 months after the learnings from you. Fantastic. So this is brilliant science. I say it as a science, and see you for Wednesday on the program and journey together for lifetime. Be a part of mentorship on timing the market. This is Ashish Kyal signing off. Thank you everyone for your wonderful time, and we are bang on time. Can you see that it is 1:15 and we are nearly at 1:15? So that is what I say. It is simply fabulous, and thank you everyone. Be a lovely audience. Enjoy talking to you all, and being here shows that you want to do something more in your life and you are at the right place. Thanks a lot.